మ్యూట్ ఎత్తమా. Lighting of the bill. Continue. माता सरस्वती के चित्र में हमारे अतिथिगण मंच पे विराजमान हमारे साथ हैं श्री एस सतीश कुमार एडवोकेट तमिलनाडु ये सब ऑनर है डायरेक्टर सीएससी मुख्य अतिथि है प्रोफेसर श्रीनिवास रखेई साहब माननीय कुलपति सीएससी और इनके साथ विराजमान है डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री शौनक शर्मा स्टेट भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान हैं और इनके साथ विराजमान है श्रीमती सीमा अनिल सहगल सुप्रसिद्ध। और अब कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मंगलाचरण मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दीपक शर्मा। हरि ओम समिधाग्निन्दु वस्याता भेदैर्बोधायाता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोताना समिधाग्निमग्निगुं समिधाग्निम् समिधेति सम्मा ईधा अग्निन्दु वस्याता दुवस्याताग्निमग्निन्दु वस्याता भेदैर्भेदैर्दुवस्याता भेदैर्बोधायाता बोधायाता तिथिम् बोधायाता तिथिम्
हविया हवियास्मिन् अस्मिन् हविया हविया जुहोता न हविया हविया जुहोता नेति जुहोता न हरि ओम। धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी। And now about this program. As I have already told this audience, we are welcoming here the online audience, and they are from Chennai and other parts of India. As you're well aware that this is a program in connection with centenary celebrations of the birth anniversary of Mahakavi Subramanyam Bharathi. And this program is being jointly organized by Central Sanskrit University, Sri Ranveer Campus, Jammu, and Youth Association for Culture Development, that is YACD, Chennai. And this program is sponsored by Sri M. Muralis, MD Sri Krishna Streets, Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai Kendra, and Tamil Matrimony. So, welcome to all. हमारे यहाँ पे जो लोग प्रत्यक्ष हमें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, and all the people from Chennai and rest of India, Vanakkam, welcome. And this program is a very special event since it represents a link between the northernmost state of J&K and the southernmost state of Tamil Nadu. And we are thrilled and delighted to welcome you all to this grand setu which has been created virtually with the means of technology. Good morning and Vanakkam from the lofty hills of Jammu to Chennai and all those who have joined this broadcast online. ते करना गए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दे श्री रंगीत परिसर जम्मू दे वाणी जिला सभागार विराजमान तुसें सबने की जय माता दी। I'm Sharad Sharma, Dean Modern Subjects and Head of the Department of English, CSU Delhi, and it is my proud privilege to welcome you all, the brilliant people, to this august gathering. First of all, welcome to all the wonderful people of Tamil Nadu and Jammu and Kashmir who are witnessing this historic occasion, when one of the southernmost part of India says hello to the northernmost part of India, and the latter responds with open arms. खुली बाहों से हम तमिलनाडु का स्वागत कर रहे हैं और तमिलनाडु ने भी हमें हेलो कहा है और उनके प्रतिनिधि सतीश जी यहाँ पे विराजमान हैं और ये कर्मी तमिलनाडु से पधारे हैं पूरा भारत पार करते हुए। उसके बाद हम वेलकम करते हैं पी कृष्णमूर्ति जी का भी of Youth Association of Culture Development Chennai, Tamil Nadu. These two persons are coordinators of this momentous occasion. We thank you for not only conceiving this program, but also choosing our university for holding this function and providing every kind of support. And then, our welcome also goes to Mr. M. Muralis, MD Sri Krishna Streets, who is the man behind this great mission of Bharatham Engum Bharathi, Bharathi in Bharat, spreading Bharati's message across the globe. और हमें ये भी सौभाग्य मिलेगा कि श्री एम मुरली जी हमें संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में आभासीय ढंग से. We also welcome the officers of the sponsors of the program, namely Sri Krishna Sweets, Tamil Matrimony, and Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai Kendra. And it is our proud privilege to have with us, as chief guest of the program, our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Sri Nivas Varkheri, Sir. Sir, this is your first visit to this campus, but your fame, as well as the wonderful way of your working, has preceded you here.
We we have come to look upon you not only as a head of the institution, but also as a father figure who is sensitive to and responsive to our needs and expectations. You have a sympathetic ear, a positive attitude, decisive action. We know how much busy you have been, and still you found time for us. And not only that, you were coming here to attend the program on tomorrow. But you acceded to our request and preponed your visit by a day to grace this occasion for all that. Thank you very much. We also thank our virtual chief guest, Professor N. Panchanathan, Honorable Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, for his blessings, and also express our welcome to guest of honor, Major General G.D. Bakshi, for his motivational speech and inspiring speech which we'll be having. We will be thrilled to hear you both. And we also welcome our distinguished guest, Sri Shamlal Sharma ji, Vice President of State BJP and former Minister. We know how he had to go to a program at 11 a.m. today, but he chose to bless us with his august presence. We are really thankful to you, sir, for your constant support to us, due to which we have come to look upon you as a family member of ours, whom we love and respect, and who also happens to be the roaring voice of Jammu. Jammu ki garjana bhi kaha jata hai. Thank you very much, sir, for your being with us today, and now welcome to you, sir. And we also bow our head in veneration before Swami Dharmishtanand Ji Maharaj, Manager Sri Ramakrishna Mutt, Chennai. We thank you, sir, for joining us virtually as special guests and welcome you for of our heart. We also sincerely thank the artist duo. दो कलाकार हमारे बीच में हैं, कुमारी शिवश्री स्कंद प्रसाद जी फ्रॉम चेन्नई, जो वर्चुअल रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी, और यहाँ पे मंच पे विराजमान है श्रीमती सीमा अनिल सहगल जी फ्रॉम जम्मू. They are with us to thrill us with musical vibrations from the high Himalayas in the north to the mighty oceans in the south. Shivshri ma'am, I have been listening to your wonderful bhajans in Sanskrit and Tamil for the past 2 years approximately on the YouTube, and I can say that it's a truly spiritual experience to listen to you. And Seema ji, I have had the privilege of listening to you since my college days. College के दिनों से हम आपका गीत सुनते रहे हैं. We are so proud to welcome you both to this program today. We also welcome from the core of our heart Mr. S. Satish Kumar, the main speaker of today's function, who flew in from one extremity of India to the other to be with us and share his wonderful views about Subramanyam Bharathi. Thank you very much, sir, for bringing us the gift of Mahakavi Subramanyam Bharathi to us. You are on a great mission, and our best wishes are with you. Welcome, sir, once again to the beautiful city of temples, Jammu, and to this program. And we also welcome Professor Nabil Mohan Thaser, the visionary director of our campus, who is always wholeheartedly supportive of the new initiative of ours, like this one too. We are sure, sir, under your leadership, our campus would scale new heights of achievement, maybe the beyond of. We also take this opportunity to welcome our very own Professor Kuldeep Sharma ji, who is so endearing, ये इतने मनोहारी व्यक्तित्व के मालिक हैं, that our worthy Vice Chancellor sir chose him as his officer on special duty for himself. Many, many thanks for being here. And we also welcome our learned heads of the various departments, namely HOD Veda, Professor Manoj Kumar Mishra, HOD Jyotish, Professor Prabhat Kumar Mahapatra, who is not with us here, but he has been a constant support. IQAC Coordinator and HOD Sahitya, Professor Satish Kumar Kapoor sir, HOD Vyakarana, Dr. Kailash Chandra Das ji, and HOD Sarvadarshan, Dr. Ghanshyam Mishra ji, and all the teaching faculty of this campus. We also welcome the various teams of our teaching and non-teaching staff members who have worked tirelessly to make this event a resounding success.
And especially we'd like to welcome and thank the technical teams. इनके बिना कुछ संभव नहीं था हमारे लिए. The technical teams from Chennai and Jammu who have created this marvel of virtual Subramanya Setu to link Chennai and Jammu to make this program possible through hybrid mode. Thank you very much indeed and welcome. And we also extend our thanks and welcome to media teams covering this event. And above all, we welcome our dear students and other online viewers without whom all this will have been an exercise in futility. To all our online and offline audiences, our sincere thanks for being here and welcome. Once again, welcome and thank you. और अब निवेदन है मेहमानों के स्वागत के लिए. सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि और ये वाइस चांसलर साहब का सम्मान. Professor Srinivas Varkheli sir, Vice Chancellor, Central Sanskrit University. इस दायित्व को लेने से पहले ये वाइस चांसलर और कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक महाराष्ट्र. ये एमिनेंट स्कॉलर हैं संस्कृत, वेदांत, न्याय और इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में महत्वपूर्ण रिसर्च की है और ये महर्षि बादरायण व्यास सम्मान की और अब निवेदन है सम्मान के लिए हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री श्यामलाल शर्मा जी का स्वागत करें. मैं तो होस्ट आप नदिका के परिवार के सदस्य हैं हमारे. और श्यामलाल शर्मा जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं. ये एक लोकप्रिय नेता है और जम्मू का सम्मान इन्हें प्राप्त है. कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA कई सालों से रह चुके हैं. हमेशा देश की एकता के लिए और गौरव के लिए ये आवाज उठाते रहे हैं और इनकी जो देशभक्ति का जज्बा है वो इनके शब्दों में भी झलकता है और इनके एंड और मैं निवेदन करूँगा डायरेक्टर साहब से कि सम्मान करें हमारे आज के विशिष्ट वक्ता श्री S सतीश कुमार जी का, जो मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पूरे भारत में ये महाकवि सुब्रमण्य भारती जी का संदेश लेके घूम रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसका कार्यक्रम भी हमारे साथ कर रहे हैं. और मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर साहब के साथ डॉक्टर सुनीता एंड डॉक्टर नीतू शर्मा जी से कि वो मंच पे आके सीमा अनिल सहगल जी का अभिनंदन करें. Mrs. Seema Anil Sehgal, popularly hailed as Bulbul-e Kashmir and the peace singer of India, she is the only singer in the world. She is the only singer in the world whose voice has been presented as a national gift. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee presented her album Sarhad as a national gift to his erstwhile Pakistani counterpart during the historic Lahore Bus Yatra on 20th February 1999. Seema Anil Sehgal is the only Indian singer participated at the prestigious Harvard University of the USA.
और अब सम्मान हमारे परिसर के हमारे परिसर के निदेशक महोदय और इसी के साथ ही मैं अपनी को होस्ट का भी स्वागत करना चाहता हूँ, मिसेस के सुबह। अभी अगले कार्यक्रम के बाद वो है माइक को हम हैंड ओवर करेंगे कार्यक्रम। फिलहाल मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, डायरेक्टर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी शिवगिरी कैंपस, जो आए और हमें संबोधित। पहले इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय न केवल हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, तो मैं जो कहूँगा संपूर्ण संस्कृत कुल के कुलपति आदरणीय छात्र प्रिय, अध्यापक प्रिय और संपूर्ण संस्कृत जगत के प्रिय हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, माननीय प्रोफेसर बरखेड़ी जी, साथ में हमारे स्थानीय पूर्व मंत्री श्यामलाल जी, जो हमारे ही यहीं के स्थानीय हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आए हुए हमारे अतिथि जो तमिलनाडु से जुड़े हैं, वो सभी, सीमा सहगल शरद जी एवं हमारे सभी विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं, एवं अन्य जो हमारे छात्रगण हैं। यद्यपि परीक्षाएं चल रही है, अभी भी हमारे सारे छात्र एग्जाम में बैठे हैं। आज कई अर्थ में बहुत ही सौभाग्य का दिन है। एक तो बहुत दिनों से हमारे परिषद को अपेक्षा थी, हमारे सभी छात्र, अध्यापक, कर्मचारी, यानी सभी बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे कि हमारे कुलपति जी का आगमन कब होगा हमारे परिसर में। संयोग नहीं लग रहा था या माँ भगवती की वैसी कृपा नहीं हो रही थी, संयोग से आज ऐसा अवसर मिला। तो हम सभी छात्र से लेकर अध्यापक तक बहुत अत्यंत प्रसन्न हैं कि कुलपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका इस कार्यक्रम में भी तथा अपने परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैसे कुलपति जी को आना तो था ही, कुलपति जी स्वयं बहुत बार, कई बार टिकट कटा हुआ रह गया। आज इस बार भी आना तो था, पर उसमें हमने इस कार्यक्रम को भी जोड़ दिया था, निवेदन किया कि अगर 10 को आने की अपेक्षा 9 को आ जाएंगे तो एक हमारा और कार्यक्रम हो जाएगा, और कुलपति जी ने सहर्ष स्वीकार किया और आज वो समय आ ही गया। यह कार्यक्रम भी एक अनोखा कार्यक्रम है। भारती जी जिसके शताब्दी के अवसर पर यह कार्यक्रम पूरे भारत भर में आयोजित हो रहा है, वो साउथ के राजा राम मनोहर राय ही थे।
उनका उनके विचार जो है उन्हीं से मिलता जुलता था। महाकवि थे, तमिल में कविताएं लिखते थे, लेकिन उनके बहुत सारे कविताओं का भाव वही था। उन्होंने एक कविता में लिखा कि भले ही जब अंग्रेजों ने कहा कि आपके यहाँ एक कहाँ है, सब तो अलग अलग प्रांत है, अलग अलग भाषा भाषी है, सब कुछ अलग है। तो उनकी एक कविता थी उसमें तमिल में, जो उन्होंने कहा कि हम सब अलग अलग हैं लेकिन माता एक ही है, एक ही माँ के संतान हैं हम। उनके कविता का यही भाव था, अर्थात हम भारतीय हैं, भारत हमारी माता है। और यहीं पर इसी कविता में उनके भारत प्रेम जो हम दिखता था, राष्ट्र प्रेम दिखता था। और ऐसी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखा। उन्होंने बाल विवाह इत्यादि जो कुप्रथाएं थी भारत में, उसको आगे लाया और उसको बंद करने के लिए आह्वान किया। जिस तरह राजा राम मनोहर राय ने अपने समाज सुधार के को आगे लक्ष्य मानकर चला था, उसी तरह तो दक्षिण में बहुत कम दिनों तक उन्होंने अपने जीवन यात्रा को चला सके, लेकिन उतने ही कम दिनों में, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की विभूतियाँ होती है वो बहुत दिनों के लिए हमारे पास नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही वो अपने अमिट छाप देश पर छोड़ गए। उस समय जबकि भारत को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक था ऐसे वीरों की, तो जिस तरह से हमारे कवि लोग अपने लेखनी से ही सही स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे रहे थे, उसी तरह हम ये महाकवि भारती ने भी अपने पूर्ण योगदान दिया था। और इसलिए भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तमिलनाडु के बहुत सारी संस्थाएं मिलकर, जैसे कृष्णा स्वीट्स है, भारतीय विद्या भवन है, ये सभी मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन भारतवर्ष पूरे भारत भर में मनाने का निश्चय लिया। आज हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह कहते हैं कि कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी, वही आज यहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है। यहाँ हिमालय है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, दोनों का के सम्मेलन में, दोनों की सम्मिलित उद्यम के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित है। और इसमें हमारे कुलपति जी भी पधारे हुए हैं। मैं उनका भी, सीमा सहगल जी का भी, और जो भी तमिलनाडु से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। जो हमारे हम तो कहेंगे हमारे मंत्री जी, जो एक होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं, क्योंकि हमारे हर कार्यक्रम में मंत्री जी का आगमन होता है। कम से कम समय में भी जब भी हमने चाहा अपने यहाँ कुछ कार्यक्रम करने के लिए, चाहे कोई हमारे परिसर पर कोई भी आवश्यक कार्य आता है, तो हम कभी भी दिन रात जब मन होता है तब मंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं और वो कार्य करवा देते हैं मंत्री जी। इस तरह जो हमारे माननीय मंत्री जी श्यामलाल जी हैं, वह आज उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, सच में हमारे कुलपति जी तो बहुत सारे कैंपस देखे हैं, बहुत यूनिवर्सिटी भी देखे हैं, लेकिन हमारे स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे इस मायने में कहते हैं कि हम लोग एक ही ग्रुप है हमारा, और वो पूरे कैंपस का ग्रुप है। जो हम सोच लेते हैं कोई भी, सब वही करते हैं। कोई भी किसी भी कार्य को करने में किसी को मतभेद नहीं होता है। जो हम ऐसा करना चाहते हैं तो कोई कह दे कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे अध्यापक जो सोच लेते हैं कि इस तरह से इस कार्य को हम कर लेंगे, तो कोई अध्यापक सोच लेते हैं तो सारे उसमें सहमत हो जाते हैं। कभी कोई मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। तो ये विशेषता हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित इस कैंपस में है। हमारे छात्रों में भी बहुत एकता है। जानते हैं कि सभी हमारे यहाँ हिमाचल के, उड़ीसा के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के सारे छात्र होते हैं। छात्रों में भी इतनी एकता नहीं देखा जहाँ किसी कैंपस में। यहाँ कोई प्रांतवाद नहीं है हमारे छात्रों में, कोई वैमनस्य नहीं रहता है, सब एक जैसे रहते हैं। सब छात्र और अध्यापक में भेदभाव नहीं होता। सब अध्यापक सब छात्र से बात करते हैं, मिलते हैं, और सभी छात्र भी
अपनी समस्या किसी भी अध्यापक को कह सकते हैं, किसी अध्यापक को सुना सकते हैं। ये सब हमारे परिसर की विशेषता है। इस विशेषता को बनाए रखने में हमारे जो जितने भी अध्यापक हैं उनका पूर्ण योगदान मिलता है, और मैं इसलिए सभी इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी अध्यापकों को भी, छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे कैंपस का भी पक्ष प्रस्तुत किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ ही now the time has come for Chennai to say hello. Hello Chennai. Hello Mrs. K.V. Subha. Are you there? Hello ma'am. Nice to see you. Hello sir. Welcome from Jammu, and we are so thrilled to have you here. And now I hand over the proceedings to you and to your wonderful guests. All the best, and over to you, ma'am. Thank you so much, sir. A very warm greeting to all the dignitaries assembled in this congregation to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav and Bharatham Engum Bharathi, the 100th year remembrance of the great poet who roared from the land of Tamil Nadu and whose heart was beating for the entire Bharat. At the outset, I extend a warm and respectful welcome to our special guest, Swami Dharmishtanandaji Maharaj, Manager, Sri Ramakrishna Math, Chennai, our Chief Guest, Dr. N. Panchanadamji, Honorable Vice Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University, our Guest of Honor, Major General Sri G.D. Bakshiji, and other dignitaries from Jammu. To commemorate this monumental occasion of celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, Chennai Sri Krishna Sweets, in association with Bharati Vidya Bhavan, Chennai Kendra, Tamil Matrimony and YACD Trust, is hosting this program titled Bharatham Engum Bharathi, meaning Pan-Indian presence of Mahakavi Subramanya Bharathi, celebrating the 100th year of the remembrance of the poet extraordinary, freedom fighter, social reformer, Mahakavi Bharathi, which is being organized in all the 28 states and 9 union territories. Today, we are delighted to join with friends from Jammu in celebrating this national hero. The program is live telecast in the YouTube channels of Chennai Sri Krishna Sweets, Tamil Matrimony, and Denamalar.in. We are indeed blessed to be associating with Mr. Murugavel Janakiraman, Thiru K.N. Ramaswamy of Bharati Vidya Bhavan, Chennai Kendra, who is our Pitamaha, who is guiding us throughout. They are the great source of inspiration and support for this project. Bharati loved music as much as he loved his writings. What more would be an appropriate way to begin the celebration of this national hero than by dedicating a beautiful musical offering at his feet? Musical tribute to Mahakavi Subramanya Bharati by Vidushi Kumari Sivashri Skanda Prasad, daughter of the renowned Mridangist Sri Skanda Siva Subramanyam. She popularized the traditional art form Nagar Sangeetan or Veedi Bhajans, street bhajans, and we are delighted to have you here, ma'am, to render the musical tribute to Mahakavi Subramanya Bharati. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி சார் நடத்துகிற இந்த பாரதம் எங்கும் பாரதிங்கிற நிகழ்ச்சி, இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு என்னோட நன்றியை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவரோட இணைந்து பாரதிய வித்யா பவன் சென்னை கேந்திராவும் YACD கோபாலபுரமும் சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாரதம் முழுக்க வெவ்வேறு மாநிலங்களில் நடத்திட்டு வரா. இன்றைய நிகழ்ச்சி நம்ம பாரதத்தோட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இந்த மக்களுக்காக பிளஸ் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி பிரின்சிபல் அவளும் இதை எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணினதுக்காக என்னோட வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும்
பிரபலமான பாரதியார் பாடல்களை இன்னைக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த, கவிதையிலே உயர் நாடு. Unable to hear. கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த, கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. Unable to hear. படை வீரத்திலே, வீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்ச ஈரத்திலே உபகாரத்திலே, வீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்ச தீரத்திலே உபகாரத்திலே, சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு, Unable to hear. சாரத்திலே மிக சாத்திரம் Audio is not coming. தருவதிலே உயர் நாடு, சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு, தருவதிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. யாகத்திலே தவ வேகத்திலே, யாகத்திலே தவ வேகத்திலே, யாகத்திலே தவ வேகத்திலே, தனி யோகத்திலே பல போகத்திலே, யாகத்திலே தவ வேகத்திலே, தனி Unable to hear. யோகத்திலே பல போகத்திலே, Audio is not coming. ஆகத்திலே தெய்வ பக்தி கொண்டார்த்தம் மருளினிலே உயர் நாடு. ஆகத்திலே தெய்வ பக்தி கொண்டார்த்தம் அருளினிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு.
Thank you, sister, for such a mesmerizing offering. Mr. Murali of Chennai Sri Krishna Sweets is here with us to welcome the dignitaries. A short introduction about Sri Krishna Sweets. Sri Krishna Sweets was founded by his father, Thiru N.K. Mahadeva Iyer in Coimbatore in 1948. Mr. Mahadeva Iyer's family tradition of selfless service inspired Mr. Murali to launch a project 2 decades back titled Naldorum Nalladhu Seivom, meaning let us do good every day. He has organized more than 17,000 social welfare projects consistently every day, spanning across decades. This project, Bharatham Engum Bharathi, was conceived by him. I request Mr. Murali to welcome the dignitaries and share his thoughts about this program. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே. Let us dance and sing, rejoice over attaining independence. Azadi Ka Amrit Mahotsav was celebrated by Mahakavi Subramanya Bharati even before India attained independence, when he penned this popular choir. Such is the power of forethought and spirit of patriotism. My pranams to Mahakavi Subramanya Bharati, an integral part of every one of us here, who visualized the new India which is unified and glorious. My humble pranams, the dignitaries, Swami Dharmanitha Maharaj Ramakrishna Maharaj, Professor Srinivasa Baddehi, Vice Chancellor CSU Delhi, Professor Madan Mohan, GHA, Director CSU Jammu, Sri G.D. Bakshi, Dr. Panchanatham, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University. Our special guest of program, Thiru Samlal Saramji, and Speaker Sri Satish Kumar. We are very much moved and thankful for the gracious acceptance of our invitation amidst his busy schedule to be the chief guest of this Mahotsav. We are honored to have you, sir. I feel blessed and humbled to be a part of this Mahotsav, celebrating heroes who fought for independence. As part of this Mahotsav, we are celebrating 100 years of remembrance of Mahakavi Subramanya Bharati under the title Bharatham Engum Bharathi. This program is being organized by us in association with Bhavan and YACD Trust and Tamil Matrimony. Covering all the states, territories, today Mahotsav is being celebrated in Jammu. I welcome you all with folded hands and also thank every one of for their kind support. We are delighted to have Sivasri Kanda Prasad musician to offer their salute to our nation and a warm welcome to all other dignitaries on stage and the people of Bharat. When we think of the word inspiration, the name that flashes in our minds is undoubtedly Mahakavi Subramanya Bharati, whose words invoke so much positive energy. His words are suffused with profound thoughts but clothed in a very simple language. Every Indian citizen has a bounden duty to celebrate people like our Mahakavi Bharati who sacrifice their comforts and the time for the cause of Indian freedom. All of us seated here carry individually and collectively a huge positive impact of Mahakavi's powerful poetries. Be it women empowerment, his idea of cashless society, economic development, sustainable development, love for nature, unity and glory of the nation, cultural values, and much, much more.
Special thanks to Mr. Sarath Sharma and Mr. Dikshit, and in particular the Director and Dean of CSU and all other team members whose support in the organizing this project is noteworthy. A warm welcome to Jammu Tamil Sangam members அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் who are assembled there. Once again, I welcome one and all this our 18th states and myself and our team will be entering the capital city of New Delhi of our 19th event of Bharatham Engum Bharathi. ஜெய்ட்லி ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. நன்றி. Thank you, sir, for your wise words, which will undoubtedly infuse the spirit of patriotism and values. We are indeed honored to be associated with the prestigious Central Sanskrit University in celebrating our national hero, as Bharati considered Tamil and Sanskrit as his two eyes. It is said that the beautiful and young Tamil flowed from the left side of the Damru of Lord Shiva, which was gifted to Saint Agastya, and the mighty and wise Sanskrit from the right side of Damru and was gifted to Panini. Both the languages echo the civilizational supremacy of this land called Bharat. I request Dr. N. Panchanadamji, Honorable Vice Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University, to share his thoughts and wish the program. We are delighted to have you here, sir. Namaste, Namaskar, Vanakkam. Good morning to all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Very clear. Live long Bharat. Live long Sri Krishna Sweets. Live long Bharatiya Vidya Bhavan. Live long Central Sanskrit University, Jammu. Live long Tamil Matrimonial. All these great organizations, together with the YACD Trust, today we are celebrating 100th year Bharatham Engum Bharathi, 100th year remembrance of Bharati. When sometimes we do not remember our own great father, name of great father, name of great mother, we don't remember. But in Bharat, we remember great personalities like Bharati. The reason is dedication. He is a freedom fighter. He was always thinking about Bharat. He was always thinking about the development of Bharat. So such a great personality, on the occasion of 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, on this 75th year, celebrating many great people of this great Bharat, great sons and daughters of this great Bharat. Among them, Bharati, Mahakavi Subramanya Bharati, Mahakavi, great poet. He is poet for all poets, Guru for all poets. Mahakavi Bharati is being celebrated today. So it gives this celebration itself, gives a great inspiration to all of us, our young generation, how we all should take our Bharat. He had a lot of dreams. So as he rightly, the managing director of Sri Krishna Sweet spoke, Aduvome, Palli Paduvome, before we got independence. We did not get our independence. Before that, as if we got independence, he started to dance. He started to sing. He started to mobilize people. That's what later our former President of India, Abdul Kalam ji, says that you have to dream. You have to dream. Mahakavi Bharati dreamt. Mahabharati danced. Mahabharati Bharati sang a song of Aduome, Palli Paduome. That means before we got independence, as if we got our freedom, that started to dance. That is the reason it became true. Our dream became true because of the sacrifices of hundreds and thousands of Bharat, our brothers and sisters. So once again, I congratulate
Sri Krishna Sweets along with the great Central Sanskrit University, Bharatiya Vidyabhavan, Tamil Matrimony, and YACD Trust for organizing this great program. We have our Honorable Respected Swami Dharmesh Maharaj. We are getting his blessings. His presence is a great motivation for us. Similarly, a great business person, but humble to the core, Honorable Managing Director Muraliji and Kumari Sivastri, Major General Bakshiji. We know the way he talks, the way he gives emotions. We are going to listen. Similarly, Professor Madan Mohan Jha, Director, our Honorable Vice Chancellor of Sanskrit University in Delhi, Satish Kumar Ji, Advocate, Subha Madam, Srimati Purnima Madam. So I have a big list of great dignitary, Tamil Sangam, Jammu, but I was given 10 minutes already, 3 minutes are over. So with your permission, I simply call great dignitaries of and audience, elect audience, investing your valuable time for the cause of Bharat, investing your valuable time, the organizing committee for doing this great program, investing your valuable time in listening to great people. Either we all will get new insights, or the existing insights should be reinforced. Human nature, scientific study of human behavior psychology says we all should get reinforced. We need good values. We need good system. We need good ethics. For all those things, our ancestors have told many things. Unfortunately, in the name of science, we need science. We concentrate only on science, but our ethics, values, tradition, culture, Bharat. So Bharat was in education forerunner for other countries. That's what Bharati says. Bharat has got everything. All his poems, if you see, he talks proud of Bharat. And he is a great poet, wonderful nationalist, and dedicated journalist. If you give me half an hour, I will speak about his journalism, the way he writes. When you read, internal state of urge in the body and mind will come such a way he will provoke and motivate people to dedicate themselves, to sacrifice themselves for the freedom of our country. That is the reason today you and I are enjoying 75th year Mahotsav, Azadi Ka Mahotsav, people like Bharati, Mahatma Gandhi, and many more, Netaji Subhash Chandra Bose, many sacrifices. They all sacrificed. Along with them, Bharati also did a lot of work as journalist, poet, nationalist, freedom fighter, social reformer. He was in a jail. He was imprisoned for many days. Social reformer, particularly for women empowerment. Today, our brothers, sisters, particularly our sisters, are highly empowered in our country, for which the seed was sown by Bharati in those days. So, such a great Bharati, Mahakavi Subramanya Bharati is being remembered by 1.38 billion of this country. That is the name. Krishna Sweets and his associates, they have given Bharatham Engum Bharathi throughout the country, throughout Bharati, and beyond our country, wherever our Indians are living, Bharat people are living, and 160 countries, all are thankfully, gratefully remember our great poet, Mahakavi Bharati, Subramanya Bharati. He says, Tani oru manidanukku unavu illai என்றால் ஜகத்தினை அழித்து விடுவோம். That means if there is one individual in our Bharat or in our world, even in the whole world, if one person does not have food for one time, the whole earth should be demolished. There should not be a world. Nobody should starve for want of food. Nobody should die for want of food. See his vision. See his vision. Recently, I went to Vietnam. A scientist brought an information every second. You see, 1 second, 1 second, 1 second. Every 1 second, one person is dying in the world. 95% of them due to poverty, that to want of a chapati, want of a bread, want of a cup of rice, want of an idli or dosa.
1 cup of rice, people are dying every second. See the internet right now, you can operate and see. One side birth clock will be rotating, another side death clock is rotating. Out of these people every second dying, more than 95% of the people are dying for want of food. That's what Bharati told 130 years ago. தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால், if there is no food for a single person, the whole world does not deserve to exist. We can destroy that. Our own brother and sister should not die, that too for want of food. And recently I went to Vietnam. One scientist brought 3 ways to solve this issue. We need $300 billion to see that nobody is dying for want of food. This makeup industry, women, mostly women, we also do, I also have done. This makeup industry is approximately $3,000 billion sales per year. If women of this world reduce 10%, it is his idea, he spoke in Vietnam, 10%, if he reduces $300 billion save, no one on this earth, not only in Bharat, all over the world, no one will die for want of food. Problem is there, solution is there. Who will implement? Even I am not able to speak to my wife and sister, reduce 10%. Then another strategy, scientific strategy, men industry. Mostly men take alcohol. Again, more or less $3,000 billion sales per year all over the world. If they reduce 10%, that money is diverted to eliminate poverty. Give food, bread to everybody. Nobody should die in the world for want of food. As Bharati told, தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். If single person does not have food for a single time, the world does not deserve to exist. People need not live in this world. That means the second alternative, 10%, if men reduces alcohol, $300 billion will be saved, that can be diverted. Problem is there, solution is there. Who will do that? Unable to do that. Then wastage of food, it is there in your hand and in my hand. The wastage of food, if it is not wasted and diverted to people, people will not die. Third solution is there. Another great Swamiji added one more solution. If there is no military in the world, all countries like Bharat, they think we should not fight with anybody. Good value system of Bharat. Wonderful value system of Bharat. We should not fight with others. If this attitude is there for all countries in the world, we stop military expenses, for another 100 years, no one will die for want of food. Solution is there. Problem is there. Solution is there. Unable to implement. It is the toughest task. That is the reason he educated. Mahakavi Subramanya Bharati, he was born 140 years ago near in Tamil Nadu, near a village, Etayapuram. He told 100 years ago that if you are really going to be educated, if you are really going to have freedom of India, if you are all really scientific people, the result is you should see that no one is dying for want of food in the world. Unable to do it. Then encouragement. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிருந்து வீழ போதும் அச்சம் என்பதில்லையே. Even the sky falls on our head. See the way he encourages. See the way he gives courage to young people. See the way he gives courage to freedom fighters. Go against the British. Even the sky falls on your head. Don't have fear. Have courage. Fight with them. Get our Bharat back from British people. What type of the way he sings, the way he writes, the way he gives emotions. People are motivated even. They have gone to the extent of dying for the Bharat. So we all should learn from Mahakavi Bharatiyar that we should dedicate, rededicate, again and again dedicate for the welfare of Bharat. Welfare of Bharat. Bharat tomorrow is in our hands. Out of 1.38 billion people of our country, Bharat, around 22%, it is equivalent to about 30 crores. Again, it is equivalent to 3 times population of our France,
do not know, our people do not know to write their names. Even today in Chennai bus stand, I could see some people are calling me, come here, please read whether this bus goes to Hyderabad, whether this bus goes to Delhi or Pondicherry. They are not able to read what is written in our bus. Illiterate. How many? 30 crores, which is equivalent to 3 times population of a European country, for example, France. So we all have a great responsibility. But fortunately, hundreds of years ago, when Bharat had Nalanda, Bharat had Dakshashila, converting stones into statue. Great universities were there in our country. India, all neighboring countries, they all came to India to study and get educated. So, if you permit me, I'll be going on talking about Bharati because of the love we all have on him, because of the respect we all have on him, because of the sacrifices he has done for our country. Anyhow, I am also eagerly waiting to listen to all other great people present here and to get the blessings of Swamiji. So that is, with your permission, once again, on behalf of all of us, I congratulate organization Krishna Sweets and Bharatiya Vidya Bhavan, Central Sanskrit University, Tamil Matrimony, YACD Trust, and other members of organizing committee taking Bharatiyar throughout Bharat and beyond Bharat. In YouTube now, hundreds and thousands of people from all over the world watching. So live long all these organizations, live long Bharat, 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav being celebrated. God's blessings are with all of us. We all will dedicate and rededicate for the development of Bharat. Thank you very much for the opportunity given to me. Best wishes. Thanks for the audience on behalf of organizing committee for investing your valuable time to get new insights and to get existing insights reinforced. Thank you very much. Bharat, live long Bharat. Live long Bharat. Jai Hind. Thank you very much, sir. The takeaways from your address are noteworthy, and we are thankful for the same. Bharati stands for motivation, and every word from his poem is infused with so much of positive energy that it instantly raises your spirit, whatever be your state of mind. Words of motivation, if delivered by the people who live through examples, whose very living demonstrate their commitment to such words, whose life force behind such words is their own lives. Such words truly inspire and truly motivate. We are very much delighted to have Mr. G.D. Bakshi with us, who will be addressing through his motivational talk after our chief guest delivery of speech. And I welcome our chief guest for today's function, Maharajji. Mahakavi sang, Kakai Kurvi Engal Jadi, the crows and sparrows of our folks, thereby demonstrating the philosophy of Vasudeva Kudumbagam, which is a core principle of Sri Ramakrishna Math, established under the blessings of our yet another national hero and youth inspiration, Swami Vivekananda. We are blessed to have Swami Dharmishtanandaji Maharaj as our chief guest for today's program. We are eagerly waiting to listen to the words of wisdom from Maharajji, who represents the institution which exists to teach the values of simple living and high thinking. He's a staunch patriot and has a great love for Mahakavi's teachings and messages. I post his delivery of address. Mr. Sharath Chandra Sharma will take the program forward. Thank you so much. Namaskar. Am I audible? You're audible, sir. Yes, thank you. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sugat Swarupaya Swamine Tapaharine. Namaskar. My special namaskar to Sri Muralis ji, Sri Panjanathan ji, Sri Bakshi ji, Madan Mohan ji, Satish Kumar ji, and Shivashri and Subhaji and distinguished guests and my dear sisters and brothers. Namaskar.
I'm very happy to participate in this celebration of 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark the 100th year remembrance of Mahakavi Bharati to spread his message across the globe. After listening to Panjanathan, there may not be much to say. Still, I shall share a few words which I thought of sharing with you. As we all know, Subramani Bharati was born on 11th December 1882. At the age of 11, as a small boy, that is in the year of 1893, his power as a poet was recognized and he was accorded the title of Bharati. And this 1893 was the year that the whole world was shaken from its deep slumber by a great warrior monk, Swami Vivekananda, who was to play a great important role in the life of Bharati. The Bharati worked as a school teacher and editor in various periods. His writings gave a new life to Tamil language and to the Tamil national consciousness. Bharati often referred to Tamil language as his mother. His song, Sendamil Nadenum Podinile, Inbam Ten Vandu Paidu Kadinile. Hearing the name Tamil, we experience great joy in the taste of the honey. That was his tribute to the mother Tamil. In the year 1906, Bharati participated in the All Indian Congress meeting in Calcutta with other freedom fighters and involved himself actively in the Indian freedom struggle. After completion of this Congress meeting, we heard that Sister Nivedita was staying in Calcutta. He went along with his friends from Tamil Nadu and met Sister Nivedita. When they informed that some young people came from Tamil Nadu, Sister Nivedita came out of his inner apartments and greeted them. Then she asked, "Oh, you have come for this Congress meeting?" "Yes." "Are you married?" "Yes." "Where is your wife?" Then they were seeing each other. "No, for this type of any program, we don't bring our woman, our wife, or anybody." "Why so?" "Now, what will they do in this Congress meeting?" Then Sister Nivedita said, "This is the mistake you have been doing. That is the reason you are suffering. The whole nation is under the grip of the British rule, foreign rule, because you have not respected the woman, you have not educated women, you have not given importance to the woman. Change your attitude, change your views. See, our nation is a Bharat Mata." These are the words used by Sister Nivedita. She's a foreign lady, disciple of Swami Vivekananda. She said, "This is Mother India. Unlike other nation, we call our nation as Mother India, Bharat Mata. This Bharat Mata needs her brave children to serve her." So Bharati was shocked to hear all these things. Then Sister Nivedita brings him out of the house and just next to his house, showing a particular site. "Here you see our Bharat Mata." And Bharati just looks at that particular place, and there the living Bharat Mata, the Parasakti, was standing, living, not imagine. It's a living vision of the Magasakti. And her hands and feet were chained. Nivedita says, "See, this is the condition of our Mother India. We all have to work hard." Vivekananda called all these people. He wanted 1,000 young people to come, sacrifice their life for the Mother India. "Can't you do your seva to this Mother India?"
She asked, "What shall I do, mother?" He asked Nivedita. Our Bharat Mata has to be brought back to their normality. She was the glorious mother. Now she is under chain. Now we need to bring her to the whole thing. So for that, year after you take up your talent, that is your writings, your poetry, to rise the nation through your poetry and upholding the woman power. This is what Bharat Mata wants from you, Bharati. She orders and Bharati falls at feet and taking her blessings, he comes back. From then onwards, he considered Sister Nivedita as his guru. You can see afterwards so many books he had written, so many poetry, in all the things he has offered is all the things he dedicated to the Sister Nivedita. Now we should remember the Bharati when we celebrate this thing, taking all the inspiration from Sister Nivedita, who could show the living mother to the Bharati means how much she felt for the nation and who received such a great power to show the living mother means that is none other than Swami Vivekananda. So today we stand in front of the whole globe. So many the neighbors are troubling us, harassing us. Our defense forces are day and night working to protect us. Because they work day and night, we are able to sleep peacefully. And we should salute our defense force and bounty people. Be as with yourself. So such a inspiration Bharati received from Nivedita and he came here and he started writing all his writings. Then the British was against him. He escaped into the Pondicherry. There he met Sri Aurobindo Ghosh. Both they started discussing about the welfare of the India, how to get out of this grip of this foreign rule. Then comes the so much of the perennial poetry comes from the Bharati. Everything is available now. And not only that, Bharati was so much inspired by Swami Vivekananda. He translated about 4 volumes of Swami Vivekananda's complete works into Tamil language. At that time, it was 8 volume. So at the end of the 4th volume, he passed away. But such was the inspiration. Our Panjanathan was telling, Achamillai, 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 Achamenbudillai. These are all the words of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said, don't fear. Mother India wants our brave children. Up India, conquer the world through your spirituality. What can stop you? Even if you fall 100 times, march on. Do your part, other will take the next part. This is what our army people are doing in the border. Such was the inspiration he received from Vivekananda and he literally practiced in his life. And later on, his inspired words shook the Tamil people here. Even today, after the demise of 100 years, the Bharati's message, his poetry is very fiery everywhere. If you can come, the Sanskrit team, which we are witnessing there, if you are able to come to Madras or Pondicherry, every school has got the Bharati's picture. Every school has got the Bharati library. And every Tamil people speak of him. And what more, our Muralis sir has taken the thing with the blessing of the same Vivekananda and Bharati only to take their message to the globe. And such a message, if it reaches the all part, automatically the national integration is formed. We have no caste. Our motherland has no caste. Bharati said, we have no caste. We are the children of Mother India. What caste can divide us? Nothing. We all should unitedly work for freedom of things.
Not only that, yes, the earlier sir told, the Bharat has visualized that Bharat must already got freedom. So that was the imagination, that was the feeling Bharat had. And when we see that today India is progressing under the leadership of our Honorable Prime Minister and others, we feel proud that the Swamiji's message and the Bharati's message spreading everywhere. Their message is in one word, if we can put into their message: love India, have a love for India. That was the message they gave. If that is a small spark of that enters into our heart, definitely our nation will rise to the great extent, which can never come down once again. So these are the lessons we are learning from so many people, so many universities, that how to cultivate love for the nation. And this is going to happen through this type of programs. They've already covered more than 20 states. And I pray that this program shall continue year after year. The momentum has been started. Let it go. Somebody or other will take up and they will reach all the part of the globe. So in this occasion, when we see the contribution of Bharati to our nation, is very remarkable. It's unequal to the, we can tell that one of the greatest patriotic poet of our motherland. And we are very proud from Tamil Nadu to talk about it. So I pray to the Almighty, Baba Sri Ramakrishna, Ma Sarada, Swami Vivekananda, and the great Bharati, to bless and guide us all in the right direction, so that our Mother India, once again, she comes back to her rejuvenated form, and the glorious Mother will bless us all. Not only that, she will guide us whole globe. This is our humble prayers to him, and I am very happy to be with you all here. Thank you so much. Thank you all. Jai Ram Krishna, Jai Bharati, Jai Vivekananda, Bharat Mata ki Jai, Jai Hind. Namaskar. Namaskar. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯೋ Bama audio கேட்கல. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಯು சிவா மேடம் திருப்பி லாகின் பண்ணுங்க. ಹಲೋ ಹಲೋ Jammu again. Am I audible now? Am I audible now? Yes. There's some technical glitch here. I hand over the stage to Professor Sharat Chandra Sharma from Jammu to welcome Mr. G.D. Bakshi to deliver his motivational address. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. K.B. Subba, for handing over the stage to me. It was indeed a pleasure to hear Swami Dharmithanand Ji Maharaj, Secretary. Am I audible? Hello Chennai, am I audible? Yes. Yes sir, you are audible. Thank you. All right. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ स्वामी धर्मानंद जी महाराज, जो कि सेक्रेटरी हैं श्री रामकृष्ण मठ, पेलापुरम,
के उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारी जानकारी दी और स्वामी विवेकानंद जी ने सारे भारत का भ्रमण किया था उस समय भारत की दशा को देखने के लिए, और आज भी वैसी ही स्थिति है और हमारे भी सतीश जी इसी प्रकार भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। And now it is my proud privilege to invite Major General G.D. Bakshi to the program. इनको हम अक्सर टेलीविजन पे देखते रहे हैं, इन प्रकार की महत्वपूर्ण डिस्कशंस में ये भाग लेते हैं और जितने मोटिवेटेड तरीके से ये वहाँ पे संबोधित करते हैं दर्शकों को, उसी प्रकार से we invite him for a motivational speech to our audiences in Jammu as well as in Chennai. Over to Major General G.D. Bakshi sir. Thank you. Am I audible? Am I audible? Thank you so very much for inviting me to this wonderful program on the 100th anniversary of the great poet laureate of India, Subramaniam Bharathi. That name itself, Bharati, Hum Sab Bharatiya Hai, is a clarion call for integration. देखिए, सुब्रमण्यम भारती जी का नाम में ही भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है। हम सब भारतीय हैं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कामरूप तक, हम सब भारतीय हैं। From Kashmir to Kanyakumari to Kamrup, this is the tantric, the Shakti triangle of India's spiritual power. कश्मीर, जहां आप लोग बैठे हैं, कन्याकुमारी, कामरूप, in the north, in the south, in the east. This is the triangle of the Indian spiritual power, the Indian Shakti. And in the south had emerged the great poet Subramaniam Bharati. The very name Bharati signifies that concept of the unity of the Indic civilization. भारतीय सभ्यता की एकता का पूरा सार इस एक शब्द भारती है। देखिए, इंडिया draws its inspiration from the Vedas. The root of the Indian civilization are in the Vedas, and the Vedas are the world's first and greatest poem. Right? The rishis were the poets who received the inspiration of the Vedas. The Rig Veda, the Sam Veda, the Yajur Veda, the Atharva Veda. All these poetry came down to the rishis and through them to us, and it is the root of the Indian civilization. ये आधार है भारतीय सभ्यता का, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे ऋग्वेद, हमारा सामवेद, हमारा यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये दुनिया की पहली कविता, the first poem of the world, right? और इसमें कवि को कवि क्रतु कहा गया है, poet creator. सुब्रमण्यम भारती was a poet creator. उन्होंने तमिल में इतनी सुंदर कविताओं की रचना की कि जिसने भारत को जोड़ा, भारत की एकता को बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं सदी से लेकर, 10वीं सदी छोड़िए साहब, 7वीं सदी में हमारा देश, our country which was called सोने की चिड़िया, the bird of gold, it was so rich, इतनी धन धान्य से भरी थी ये वसुंधरा, भारत माता। ये ललचाई आंखों से लोग देखते थे इसको हर जगह, दूध घी की नदियां बहती थी यहाँ। फिर क्या हुआ साहब, कहाँ गया हमारा सोना? सोने की चिड़िया तू कहाँ उड़ गई? शीर के तेरे सागर सारे क्या तेरी धूप में झुलस गए? क्या हुआ हमको? 7वीं सदी से हम लोग का दौर शुरू हुआ। The cycle of invasion started from the 7th century onwards.
one invasion after another, after another, after another. They came, they burnt our city, they destroyed our temples, they looted our people, they raped our women, and they carried them off as slaves to be sold in the brothel of Kabul, of Samarkand, of Bukhara. हमारे देश पे हमला हुआ, हमारे शहर जलाए गए, हमारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, नालंदा की यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई और वो 6 महीने तक जलती गई, बिकॉज हम अपने आप को बचा नहीं। Fortunately for us, these invasions came in wave after wave. They started from the Khyber and Bolan passes. They started from northwest India. It was then that the Indian culture, the Indian civilization was preserved. Where and how? By the South, by the people of the South. Because these invasions took their time to reach to South India. And while the Mughals were ruling in the north, the Chola Empire had spread its power and influence all over Southeast Asia. The Cholas, they had spread Indian civilizational values, ethos, culture to the countries of Southeast Asia, to Burma, to Myanmar, to Thailand, to Cambodia, to Vietnam, to Bali, Sumatra, Java, all over. They had spread Indic values and culture. They had preserved Indic values and culture. नहीं तो हम खत्म हो गए होते अगर दक्षिण भारत ने हमारा जो धरोहर है संस्कृति की उसको नहीं बचा के रखा होता तो आज वो खत्म हो गई। We owe a great debt of gratitude to our brothers and sisters in South India, south of the Vindhyas, who protected, preserved, and nurtured the Indic values, civilization, values, and tradition. And a part of this was Subramaniam Bharathi, one of the greatest poets of the Tamil language, whose Jnana Ratnam, the chariot of knowledge, is one of the classics of the Tamil language. And it still continues. And he is the person who did not confine his activities to Tamil Nadu. He came to Calcutta, to Bengal, to follow Sister Nivedita, to follow Swami Vivekananda, and spread his message. Because he was a great patriot. वो एक बहुत बड़ा हमारा देशभक्त थे सुब्रमण्यम भारती जी, जिन्होंने भारत को एक तार में जोड़ने की कोशिश करी, जैसे आदि शंकराचार्य ने किया था, like the Adi Shankaracharya had done some many centuries ago. He had created much in the north, in the east, in the west, in the south. Ranjit, is there any technical issue there? Am I audible? Yes, sir. Now you're audible. All right. So as I was saying, that Adi Shankaracharya had established, he had traveled all over India, talking of Advait Vedanta, spreading the gospel of the Advait Vedanta from the Vedas, right? And he had established mashas in the south, in the north, in the east, and in the west. And the Shankaracharyas of these mathas were from opposite directions of the country. So that the matha in the north and the Shankaracharya from the south, and vice versa, east from west and west from east. The aim was to unite India and make it Bharat. उनका उद्देश्य था कि भारत को एक तार में जोड़ा था, भारत को एक माला, एक हार की तरह गूंथा था, जहां विविध तरह के फूल एक माला में गोंद दिए जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे देश पे, जैसे मैंने बताया, हमले पे हमला, तबाही हुई, कत्लो आम हुआ, नरमुंडों के ढेर लगा,
When the invaders came, they put up the pile of skulls at Khuni Darwaja in Delhi. They massacred us. Massacred us. That was the time. First came, the Afghan, Muhammad Ghori, Muhammad, the Afghan invaders, followed by the Persian invaders, followed by the Turkic invaders, followed by the Mughal invaders, followed by the British. One after another. एक के बाद एक आप पे हमले। अब देखिए, ऐसा समय आ गया है कि भारत में फिर से एक स्फूर्ति और शक्ति जागी। कैसे जागी? उत्तर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज और पूर्व में जनरल लचित उर्फ खान आसाम में खड़े हुए। और इन्होंने 100 वर्ष के अंदर जो आतंकवादी मुगल साम्राज्य था उसका समूल सर्वनाश कर दिया। They destroyed the Mughal empire and the indigenous military revival took place. And then we attacked and captured under Maharaja Ranjit Singh. We attacked and captured the whole of Pakistan, what is now Pakistan. And then we attacked Afghanistan. Hari Singh Nalwa spread terror in Afghanistan. He was the governor of Jalalabad. General Zorawar Singh captured Ladakh, captured Baltistan. General Zorawar Singh invaded Tibet. General Zorawar Singh साहब ने लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के ऊपर अभियान छेड़े। लद्दाख और बाल्टिस्तान को उस वक्त के भारत में विलय कर दिया और तिब्बत पे हमला किया 1841। We saw a revival of Indian military arm. फिर अंग्रेज आए, हमारी आपसी फूट डाली, हमको आपस में लड़ाया। The British came, they made Indians fight one another. They told the people of South India, you are different. You are not Indian, you are something else, and you have nothing to do with the Indians of North India. That is what Subramaniam Bharati opposed. We are all Bharatiya, he said. उसने कहा हम सब भारतीय हैं, आपकी नेशनल कैडेट कोर का गान क्या है? हम सब भारतीय हैं। Whether we are from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Uttarachal, Haryana, Punjab, Kashmir, we are Gujarat, we are all Bharatiya first and everything else later. हम सब भारतीय हैं। जब हम इंडियन आर्मी में आते हैं तो हमको बोला जाता है जो सुब्रमण्यम भारती ने कहा। What Subramaniam Bharati said, we are told in the army, leave your caste, your creed, your language, everything outside the gate of the battalion. You are now Indian. Your religion is India. आप भारतीय है, आपका धर्म भारतीय का है और कुछ नहीं, क्योंकि तोड़ के ही हम पे राज किया गया, आपस में लड़ा के हम पे राज किया गया। People have broken us up on the basis, fault line of caste, of creed, of language. They have made one Indian fight the other, and they have ruled. Foreigners have ruled this country. This is what Subramaniam Bharati fought against. The British rule. He was inspired by the 1917 Bolshevik revolution in Russia, when the Tsar was killed, assassinated. And he said, if the Tsar can be killed, the autocrat of the Tsar, so can we overthrow the British Empire. That is what he worked for. There were nationalists in South India, like Subramaniam Bharati, like V.V. Iyer, like Shri Aurobindo. All of them from the South, they fought for the freedom of India. And they, because of them today, we are breathing
as free Indians. Otherwise, you know, children, आप जानते हैं बच्चों, अंग्रेजों के जमाने में जो आपके क्लब्स हैं, लेकिन जिमखाना क्लब और जो बड़े बड़े क्लब थे, उनके बाहर एक बोर्ड होता था. There used to be a board outside all British clubs. Indians and dogs not allowed. भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते. They called you dog. And we were so busy fighting one another on language, on caste, on creed, on jati, on everything that you can think to divide yourself. You divided yourselves, and 40,000 British soldiers, they ruled the whole of India with an army of about, you know, which was initially about 1 lakh. You'll notice he left. Then went up to 13 lakhs in the First World War, went up to 25 lakh Indians in the Second World War who fought the British. But they could not fight for their own country. This is what Subramaniam Bharati told me. You are all Bhartiyas. आप सब भारतीय हो, आपस में मत लड़ो, इकट्ठे हो और अंग्रेजों का सर्वनाश करो. Tamil people. Throw them out. Throw them out. Please throw them out. And that is what was done. No, you it are won't free work. today because of Subramaniam Bharati. Internet is here. Internet I do not want that. Hello. Hello. Can you hear me? Read like this. There is some Watching something. Yeah, keep talking. Shall I continue or do you want me to stop? Hello? Hello? I am addressing audiences simultaneously in Jammu and Chennai. So I am switching from Hindi to English. You let me know the language you want me to speak in. Hello? Hello? Hello, please. Yes, sir. I continue? Yes. Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you. Which is the larger audience? In Jammu or in Chennai? Okay. So as I was saying, Subramaniam Bharatiya, the very name Bharatiya, surname that he used, he did not use a caste name. He did not use a place name. He used Bharati. There is no greater patriot than Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati से बढ़कर कोई patriot नहीं, कोई देशभक्त. उन्होंने देशभक्ति कूट कर भरी. You know, he taught patriotism and nationalism to the country, and that is one thing that India needs today is nationalism, patriotism. Is nationalism and patriotism. And that is what we learned from the great poet saint Subramaniam Bharati, a great freedom fighter, a great patriot, a great nationalist. And it is he who taught us to be patriotic to the motherland, to forget about caste, to forget about creed, to forget about language and be Bharatiya, like Subramaniam Bharatiya. I salute Subramaniam Bharati. He was the greatest poet. He was following the Vedic tradition. He was following the Vedic tradition, and in that Vedic tradition is the tradition of poetry. Subramaniam Bharati was the greatest poet of the Tamil language. The greatest poet of the Tamil language. And through that, his poetry, from the age of 7, he has started writing poetry. And through that poetry, he served the people of Bharat. Bharatiya served the people of Bharat to make them one nation, one country, one people. DNA studies have shown that there is no difference in the DNA, north and south of the Vindhyas. We are one people. We are all Indians.
हम सब भारतीय हैं is what Subramaniam Bharati said. The soul-stirring words serve to inspire us even today. They inspire us. I've had wonderful soldiers from the south, the Madras regiment, Travancore soldiers. They have done a beautiful job in Jammu and Kashmir, in Kargil, in Arunachal Pradesh, in Ladakh. Colonel Babu from the south, Major Sandeep Punni Krishnan, Ashok Chakra from Kerala, from the south, fought for India, fought for Bharat, and was a true Bharatiya, was a true Bharati, like Subramaniam Bharati, like Subramaniam Bharati, a true hero of India, a true son of India. And nobody has done, I think, as much in recent times to unite India as Subramaniam Bharati. Most of the voices to unite India, powerful voices, have come from the south. The Adi Shankaracharya came from the south. In his 30 plus years of service, he traveled the whole country. He held debates to spread the doctrine of Advaita Vedanta, and he unified the whole of India as one consciousness, as one Indic civilizational consciousness. And then the same task was done by Subramaniam Bharati, whose very name Bharati signifies the need for the unity of India beyond caste, beyond creed, beyond language, beyond everything, beyond religion. We have to be Bharatiya. Our religion must be Bharatiya. हमारा धर्म की भारतीयता होनी चाहिए. We should be children of Bharat Varsha. It is not a new concept. Some people told us there was no nation called India. The British unified us and created a nation. Nonsense. When you sit for a havan or a yajna, you start with these words, Jammu Dvipe Bharat Khande. Bharat Khande. That is what Subramaniam Bharati was telling you. तुम भारतीय हो, मैं भारतीय हूं, आप सब भारतीय है. You are all Indian. This is what Subramaniam Bharati said. And his name, he made it Bharati. There would be no caste in it, no creed in it, no place name in it. A unity called India, a unity called Bharat, a Devi called Ma Bharati. And if you read the Vedas, you will find the mention of three Devis, Ila, Bharati, Saraswati. Ya Ila, Bharati, Bhi Saropa. Read the Vedas, the first poem in the world, the greatest poem in the world, from which a civilization has emerged. And to help this civilization emerge, nobody has done as great a service as the great Tamil poet Subramaniam Bharati, the great patriot Subramaniam Bharati, the great nationalist Subramaniam Bharati. On his 100th anniversary, I salute Subramaniam Bharati, man who helped to unify the Indic consciousness and spread the message of Advaita Vedanta. Thank you very much for inviting me. Jai Bharat! Jai Hind! Thank you very much. Thank you very much, Mr. As the response from the ये है हमारे भारत की जनता, हमारे भारत के युवा, जिन्होंने
आपके इस महत्वपूर्ण भाषण को सुना, प्रेरित हुए और मोटिवेटेड हुए। आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में भारत की पूरी इतिहास को गिनाया, सुब्रमण्यम भारती जी की उपलब्धियों को गिनाया और ये बताया कि किस प्रकार समय आ गया है कि हम अपने भारत को फिर से एक करें। और आज हम सुब्रमण्यम भारती जी को तमिल का कवि कह रहे हैं। समय आ गया है कि हम सुब्रमण्यम भारती जी को भारत का कवि कहें। वो हमारे कवि हैं, भारत की संतान है। इन्हें भारतीय कह के हमें गौरव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी बख्शी साहब। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा माहौल बदला जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती सीमा अनिल सहगल जी से, जो कि एक मशहूर गायिका है। वे मंच पे आए और अपने गायकी से हमें अभिभूत करें। श्रीमती सीमा अनिल सहगल। हेलो 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 हेलो, आप सुन सकते हैं? आप सब बुद्धिजीवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। हेलो हेलो, थोड़ा बता दीजिए। भारती जी के शब्द लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, महान कवि सुब्रमण्यम भारती जी को मेरा शत शत प्रणाम। भारती जी की एक रचना जिसका ट्रांसलेशन अनिल जन्मविजय जी की हुई है, वो कल ही मैंने देखा। मैंने उसे देखा और आपके लिए वो शब्द लेकर आई हूँ। भारती जी की ये एक कालजयी रचना है और मैं समझती हूँ कि ये जो उन्होंने लिखा है, ये भारतवर्ष के सारे नौजवान अगर इसे अपने साथ लेके चलें तो उन्हें किसी भी क्षेत्र में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका उन्वान है निर्भय। हर हाल में निर्भय रहो। निर्भय निर्भय निर्भय, हे निर्भय निर्भय, अचमिले अचमिले अचमिले, हे अचमिले अचमिले अचमिले। चाहे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, चाहे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, निर्भय निर्भय चाहे हमें अपशब्द कहे कोई, चाहे हमें ठुकराए, चाहे हमें अपशब्द कहे कोई, चाहे हमें ठुकराए, निर्भय निर्भय निर्भय।
हमसे जाए जीवन की सुविधाएं, चाहे हमसे जीवन की सुविधाएं, चाहे हमसे छीन जाए जीवन की सुविधाएं, निर्भया निर्भया रहो, चाहे हमसे चाहे हमें संगी साथी है विष देने लगे जाए, चाहे हमें संगी साथी है विष देने लग जाए, निर्भया रहो, निर्भया हमेशा निर्भय रहो, चाहे जो भी। मुझे लगता है मोदी जी ने यही कविता तो उन्होंने पढ़ी है, देखिए वो कितने ठीक है, पर कितने उनको हर्डल्स हैं। आसमान ही क्यों ना फटने लग जाए, चाहे सर पर आसमान ही क्यों ना फटने लग जाए, निर्भय निर्भया रहो, निर्भया और क्योंकि मैं जम्मू उस धरती की बेटी हूँ, तो मैं दो लाइना सारी डोगरी जबान से सारे जम्मू की पहचान के सारे माता देवी वैष्णो देवी, इन्हें सारे भी कल वैष्णो देवी जाना है।
तरीके से आपने प्रस्तुति दी इस गीत की और इससे पहले वाले गीत की, अद्भुत। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जनता ने खुद प्रदर्शित कर दिया है कि वो कितना बढ़िया। और इस अनुपम क्षण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और I'm really overwhelmed with my audience. Wonderful reception, wonderful appreciation. You are great, simply great. बहुत बढ़िया, thank you. और अब आपके सामने आ रहे हैं विशेष वक्तव्य के लिए श्री एस सतीश कुमार जी, जो एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में, और साथ ही इस बहुत बड़े मिशन को लेकर ये निकले हुए हैं। दक्षिण भारत में ये बहुत कुछ कार्य कर चुके हैं, उत्तर भारत में ये पहला कार्यक्रम है इनका। निवेदन कर रहा हूँ श्री एस सतीश कुमार जी से। श्री एस सतीश कुमार सीधे चेन्नई से फ्लाई करके यहाँ पहुंचे और आज श्री गुरुभ्यो नमः। அறிவிலே தெளிவு, நெஞ்சிலே உறுதி, அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம், பொறிகளின் மீது தனியரசாணை, பொடுதலாம் நினது பேரருள் நெறியிலே நாட்டம், கர்மயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய், குறி குணம் இல்லதாய் அனைத்தாய் புலவிடு தனிப்பரம் பொருளே। निर्मल ध्यान अटल धीर छाती, मन में प्यार प्रवाह की वृत्ति, इंद्रियों को गुलाम कर युक्ति, ईश्वर कृपा में सदा सैव स्मरण कर भक्ति, कर्म योग में स्थिर हुई शक्ति, देहि देहि ये सब देहि, ये निर्गुण रूप सर्वानंद ब्रह्म, ये देही देही मुझे ये सब देही। महाकवि सुब्रमण्य भारती की एक कविता से शुरू करके बैठे हुए सारे श्रेष्ठ लोगों के चरणों में मेरा पहला प्रणाम। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हियर on this basis occasion of celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav. First of all, I thank our director Madan Mohan Jas for giving this opportunity. By seeing our vice chancellor, so far I have not seen such a young, energetic and handsome vice chancellor so far, and I heard about him, about his extraordinary knowledge and wisdom. When I was talking to him for a few minutes itself, I was able to understand how knowledgeable and his command over the entire subjects, not only on the university subjects, beyond our universe subjects, he has got extraordinary knowledge, and you are so grateful to have such a vice chancellor for you. And I applaud him and appreciate him for giving this opportunity. My gratitude to our Swamiji for his graceful blessings, because I am also an alumni of Ramakrishna Mission, Vivekananda College. Our Dr. Panchanathan ji, he has given an extraordinary, vibrating speech about Mahakavi Bharathi and also about the event. And of course, a brainstorming speech given by our Major General Bakshi Sahab. My salute karta hoon, because of his emotional involvement on the subject, especially on our national integration and about our country. He has given such a blessing to you all,
and he inspired the entire show. Of course, by the wonderful Ghana, Bharti ka translation bhi it is something extraordinary. And I sincerely thank Mr. Murali ji of Krishna Sweets, and that is his idea of promoting Mahakavi Subramanya Bharati on the occasion of our Amrit Mahotsav, because the 75th year of our independence is coinciding with the Shraddhanjali year of 100th Shraddhanjali year of our Mahakavi Subramanya Bharati. So he is a philanthropist in South India and industrial giant. He spends most of his earnings only for the purpose of bringing the people together, especially national integration, भारत की एकता के बारे में, और कितना खर्च करते हैं उनको मैं अभी प्रणाम करता हूं. श्री श्यामल जी, I think it's the right time. कश्मीर, जम्मू और हमारे तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट में the petals of lotus will spread and it will blossom more and more. Now it's a high time for us to think about that, and we need leaders like you, frontiers like you, to lead our country for all prosperity and unity in the coming years. विद्यार्थियों, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी और आश्चर्य होता है, क्योंकि आज सभी लोग पैसा कमाने की शिक्षा में प्राप्त करके अभी सोच रहे हैं, लेकिन आप पैसा को मन में न रखते समय अपने देश की पुरानी और इतिहास और पूर्वजों को कलाचार, तत्व और जीवन शैली के जानने के लिए आप अपने कदम उठाए हैं, तथा ऐसे दुनिया को ऐसे शिक्षा देने के लिए तैयार करते हैं. आप सबको जानना चाहिए, विश्व में जब मनुष्य ने एक जानवर की तरफ जीवित रहते समय हमारे देशवासियों कितने नागरिक थे, अपने कलाचार, धन, वीर, कविता, ज्ञान और विज्ञान में उच्च सामाजिक मिसाल थे. सोचिए, लाखों वर्ष के पहले हमारे पूर्वजों ने कैसे विचार किए थे. असतो मा सद्गमय, असतो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय. इसी तरह हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष के पहले भी सोचे थे. सर्वो भवन्तु सुखिनः, वो सोचे थे लाखों वर्ष के पहले. इसी तरह जब हम पूरे धरती में विश्व शांति के अनुमान करते समय, उस समय अन्य लोग कैसे थे. अपने भूख और रोटी के कारण अपने साथियों, भाइयों, पड़ोसियों को उनके खून पीकर मानवता को मारते रहते थे और ऐसी अमानवीय नीच कार्यों को सिविलाइजेशन बोलते रहते थे. ऐसे अन्य देशों के साथ युद्ध करते समय से भी हमारे वीर, धीर तथा पराक्रम के अलावा हमारे प्यार और मानवता, उन दुश्मनों को भी अभिमान और सम्मान दिए थे हमारे पूर्वजों ने. परंतु ये सब गुण दुश्मनों को समझ नहीं पाए. हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण छोड़ते समय से भी हमारे धर्म के रक्षा के लिए अपने सांस दान दिए थे. हम सोचना पड़ेगा. अभी सारे विश्व में अलग अलग नाम में बोलते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस, म्यूचुअल ट्रस्ट, नॉन वायलेंस. अभी एक नया शब्द भी आया है, नो गन कल्चर. इतना नाम से बोल रहे हैं, मगर ऐसे अलग अलग शब्द में
हमारे पूर्वजों ने ऐसे सोचे थे कि एक ही छाती के नीचे प्रकट करके चुके हैं, वो है हमारा सनातन धर्म। ऐसी धर्म को बार बार स्थापित करने के लिए अनेक अनेक रूप में इस धरती में हुए। राम कृष्ण ऐसे अवतार भी हुए। उन अवतार के अलावा इस धर्म को उद्दिष्ट के लिए इस धरती में भगवान की प्रतिनिधि की तरह ऋषियों, आचार्य पुरुषों, कवियों, राजाओं और महान पुरुषों को जन्म भी होते रहते थे। इसके कारण जब हमारे धर्म को खतरा होता है, जब हमारे धर्म को खतरा होता है, उसी समय की परिस्थिति के कारण ऐसे महान पुरुषों का जन्म पूरे देश में जगह जगह पर होता रहता है। ऐसे महान पुरुषों में एक हमारे देश की स्वतंत्रता समस्य काल पर जन्म हुए एक श्रेष्ठ पुरुष हैं श्री सुब्रमण्य भारती। दोस्तों, हम ऐसे पूरे वर्ष में हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए 75 वर्ष का आजादी अमृत महोत्सव मनाते हैं। सोचिए, हमारे देश की स्वतंत्रता का उत्सव एक दिन का उत्सव नहीं और काम नहीं। हमारे हर एक क्षण में, एक एक सांस में ये स्वतंत्रता का उत्साह हम मानना पड़ेगा और ऐसे मान के ऐसे खुशी, उत्साह और शांति हर एक देशवासियों को देना हर एक देशवासियों का कर्म और कर्तव्य भी है। जब हमारे देश के बारे में सोचे समय हमारे प्रदेश की समस्या, गौरव और वीर पुरुषों का अभिमान के अलावा हमारे पूरे देश का प्रभाव, गौरव, चरित्र, भूगोल एवं पूरे देश की वीर पुरुषों का प्रभाव को जानना और उनको अभिवादन करना आज दिन हम सबको आवश्यक हो चुका है। साथियों, हम सब पूर्व से दक्षिण, उत्तर से पूर्व हमारे बीच में ऐसे प्रभाव को आदान प्रदान करना आज दिन का आवश्यक है। इसलिए इस सम्मेलन में हमारे देश की राष्ट्र कवि, प्राचीन तमिल भाषा की कवि सुब्रमण्य भारती के बारे में कुछ दृश्य साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, it is the greatest movement, especially in Jammu, as I come all the way from Tamil Nadu to meet you all, just to share my views on Mahakavi Subramanya Bharati on his 100th remembrance year and Shraddhanjali year. It is a high time for us to know about many of our national leaders, because only this territory has given so much of life, crore ka life, only this land has given to the country when compared to the other states and jurisdictions. दो सच करोड़ का नाम हमको नहीं जान सकते हैं, because not in the history, and many of the records have been stolen, it has been confiscated and burnt also. If you see the history, whenever there was an invasion, not now, not by the British 300 years ago, even before 100 years, if you see the history, 326 BC, that was the first invasion done by Alexander. In that invasion also, our great kings have fought against them and made them to run away from our country. Only because of the bravery of this land, India is surviving today. That we have to accept is a fact also. Unless otherwise, the greatness of this heroes and people of this nation, and especially to this Kashmiri territory, India would not be, as of today, promoting the dharma of our existing culture and tradition. आपको मालूम पड़ेगा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह
खेमू कलानी, सर्वानंद कौल प्रेमी, उनको आपको मालूम पड़ेगा कितना त्याग किया वो। गिरधारी लाल डोगरा, who is a role model for me as a lawyer. मकबूल शेरवानी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और प्रेमनाथ डोगरा, कांटा वाजिर, आजादी का अमृत महोत्सव का प्रयोजन, इन सबके बारे में हम at least we have to listen the names of the great heroes of this territory. In the historic period, Lalitaditya, Harshavardhan, how Ashoka, the great king, has ruled our country under peace and shanti. We have to think it's the right time for us to know about the great heroes of our country. Similarly, when we are thinking about this territory, we should know about some names, at least, of the other states people, the great heroes. पृथ्वीराज चौहान, अभी फिल्म आता है, फिल्म आने के पहले भी हमको जानना पड़ेगा। राणा प्रताप सिंह, कित्तूर रानी चेन्नम्मा of Karnataka. You cannot see such a great queen who fought against the British in those days. She is a role model for all the females and women of this country. Birsa Munda is a tribal king. Alluri Sitaramaraju, who was a tribal hero of Andhra Pradesh. Togan Sanma of Northeast, and Nangba. Nangba was the greatest hero who fought against British in those days. But even such great heroes' names are not known to us, and we should thank our Vice Chancellor and also our Director for giving this opportunity. At least we are able to hear the names. This will motivate us to read the history of those great people. Generally, whatever the subject we are reading in the history, those are all belonging to the history of Second World War, or maybe even prior to that, during the British period when we attained our independence. Bharati was also a contemporary of Tilak Maharaj, Lala Lajpati Rai, and also Bipin Chandra Pal and Swami Vivekanand, our Nivedita. He was a contemporary of those periods. He brought Lala Lajpati Rai from Punjab to Tamil Nadu, and he arranged a meeting and he translated each and every version of his speech in Tamil and English for the people of South India. Mahakavi Subramanya Bharati was a great devotee of Tej Bahadur Singh and Guru Gobind Singh. Bharati wrote a poem on Guru Gobind Singh, how he gave a speech before Panch Pyare ke baare mein. At that time, how Guru Gobind Singh has inspired the youth of Sikh. Mahakavi Subramanya Bharati has composed a song treating himself as Guru Gobind Singh, and he was a great devotee of him. Similarly, Subramanya Bharati was a great devotee of Chhatrapati Shivaji. When Chhatrapati Shivaji was giving his firing speech before the soldiers, before the war with Aurangzeb, Subramanya Bharati has himself treated as Chhatrapati Shivaji, and he composed a song by changing the name as if it is for the Bharat and not for the people of Maratha alone. That was the greatness of Bharati. He translated the version of Chhatrapati Shivaji's greatest speech in Tamil, or understanding of the spirit to the people of Tamil Nadu. Bharati was a great Sanskrit scholar. Though he was born in a province called Ettayapuram in down south of Tamil Nadu, he was honored the title Bharati. His original name was Subramanyam. Because of his extraordinary knowledge and wisdom, he was graced by Saraswati Mata. Because of that, he was awarded the title Bharati at the age of 7 for his literary knowledge and wisdom. After that, he was called Bharati himself. His original name was, many of us even do not remember what is his original name. When you say Bharati, we think only Mahakavi Subramanya Bharati. Mahakavi Subramanya Bharati was living in Kashi, and he learned nearly 32 languages in the short span of 39 years.
He had extraordinary knowledge and he was a scholar in all the languages. Because of that only he was able to interact with Lala Lajpati Rai. In Marathi, he was able to interact with Bal Gangadhar Tilak. And in Bengali, he was able to interact with Vipin Chandra Pal, Vavesu Iyer. And many such great patriots were all united only for the purpose of keeping our country intact in those days. Remember, in those days, there were more than 500 provinces. No one would have thought that India will become united. And even the British, they thought they can divide the country into many pieces. That was the idea they had. That's why the divide and rule was followed by British in those days. Geographically, they divided. Politically, they divided. By using linguistic ways, they divided. Even they divided us by north, south, east, west. Like that, they divided us for the purpose of divide and rule policy. But people like Bharathi, they understood the seriousness of it because this is going to be alarming in future. That's why Bharati's poems were we are all united, we are all united. That was the thought process of Mahakavi Subramanya Bharati in those days. When he met Nivedita, Mother Nivedita at Bengal, he was able to conversate with her in Bengali also and also in English. Bal Gangadhar Tilak, when he visited Kashmir, he gave the idea of Paisa Fund. That was the idea given by him to promote the culture and trade of these people. And only these Kashmiri people, they took the idea of Paisa Fund from Bal Gangadhar Tilak for the economy and promotion, and Swadeshi movement started from Kashmir to Kanyakumari. That was understood by Bharati in those days. What was happening in Kashmir, that was known to Mahakavi Subramanya Bharati in south. He wrote, Pattinil Adayum, Panchinil Udayum, Panni Malagalana Vidi Kuvipom, Katti Diraviyum Kondu Varuvar, Kasini Vanigarku Avai Kodupom. The tradition and culture between Kashmir and Tamil Nadu is production of silk and cotton. That Bharati, he got inspired, he said, you bring your silk production and also the cotton cloths, we will accumulate everything here and we will export. By that, we will bring our GDP more. That was the thought given by Mahakavi Subramanya Bharati in 1900. How he visualized our country. He graphed the India's border. Remember, in 1900 I am talking. In 1900, he gave the border for our country. Vadakki Imayamalai Papa, Terkil Vadum Kumarimunai Papa, Kidakkum Periya Kadal Kandai, Adan Kidakkilum Mekilum Papa, Bachon, Uttar mein बर्फ हिमालय है, दक्षिण में कुमारी मांग का सीमा है, प्रवाह सागर है, इधर देखो देश की पूरब और पश्चिम में बच्चों. He gave the border in 1900. Bharati was very clear about our Vedic culture. He declared and he proclaimed that this country is a country of Ved Bhumi. Vedam nirindadinda naadi, pala veerar pirandadinda naadi, sedamilada Hindustanam, idai daivam endru kumbidedi papa. ये भूमि वेद भूमि है, वीरों का भूमि है. ये भूमि को हम रक्षा करना है. अविभाजित हिंदुस्तान है. Remember, 1900 he was able to declare ये अविभाजित हिंदुस्तान है. ये भगवान की तरफ पूजा करो बच्चों. सोचिए महाकवि भारती how he graphed, that is extraordinary, which is required at present days. Bharati in his poem வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலாவுவோம், அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்,
Bharati is declared very clearly. See, the बर्फ हुए हिमालय, सारे हिमालय तो हमारा है. When he declared in 1900, don't enter the entire बर्फ हिमालय. It is हमारा है. We'll play there, we'll enjoy there. It is because it is only for us. Similarly, he said one more thing. Remember, the sea is what we are seeing at present on both sides of our country. We are calling that as Arabian Sea. It's Arabian Sea. And here we are seeing Bay of Bengal. But Bharati didn't agree with that. He said the entire whatever commerce, economics we are doing on the western region, it belongs to us. Bharati, he declared, Mele Kadal Murudum, Kappal Vidum, whatever the ships we are sailing, that entire sea area is ours. That was the declaration given by Bharati. The name of that Arabian Sea was declared by British to spoil our culture, because the name of that sea was Sindh Sagar. It was Sindh Sagar. Similarly, for the Indian Ocean, the name of the Indian Ocean was previously called Hind Mahasamudra or Ratnakar. Ratnakar was the name for the Hind Sagar. Similarly, for Bay of Bengal, the name was previously called Kaling Sagar or Ganga Sagar, because the Ganga, river Ganga and the Brahmaputra, it is coming and integrating with Bay of Bengal. That Bay of Bengal, where it integrates, now it is in Bangladesh, in river Padma or Meghna. There only it integrates. Bharati has seen that. Bharati has given a simple graphic representation. I want taking not much of time. I want to say only this Bharati's poem. Just imagine how Bharati has given an Akanta Bharat. In one song he says, Velli Panamali in Vidalavo. By that Bharati is saying, let me take a boat in the Sindh river. I will take a boat in the Sindh river. I'll come down. I'll take the beautiful girls of Kerala in our boat. Then Bharati is sailing along in the river boat and seeing the Seth Samudra. By seeing the Seth Samudra, Bharati is saying, let us broaden the roads of Seth Samudra and we'll construct a overbridge to Sri Lanka. Without disturbing the Seth Samudra, Bharati is giving a vision. Will construct a overbridge to Sri Lanka and unite Sri Lanka and India together. Then Bharati is coming slowly here and seeing how the river Padma and Meghna is, the water is getting wasted in sea. Bharati has given a different dimension in those days. What we are talking now of interlinking rivers. Bharati has visualized that interlinking of rivers. He said, வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்கிறோம். Bharati is giving a different dimension, saying that let us divert the water from the river Ganga and Brahmaputra, which is getting wasted in sea. We convert that water for the irrigation purpose for the central India. That was the vision given by him. By that, Bharati's vision was on economically, politically, socially, on women's liberation also. Bharati's idea was totally different. Bharati said, Kashi Nagar Pulavar Pesum Muraidan, Kanchil Ketpadar Karibu Singhu. The Pandits of Kashi, whatever bhashan they are giving, that we will listen in Kanchi. Pandits say, Hum sunenge. At that time there was no radio, but Bharati visualized that. When Chandra Mandalathiyal Kandidalivam, Bharati was visualized about the astronomy also. Like that, Bharati's vision about our economy, our science and technology was something amazing which you cannot think. Due to short of time, I'm unable to express my whole feelings to you. Bharati said, in one song, Bharati said, Muppadu Kodi Muhamudayal, Ival Moimbura Ondudayal. Ival Seppu Mori Padinetudayal, Il Sindane Ondudayal. Peace the Karod Kahevali.
उसकी नयन झलक सिर्फ एक ही होगी। 30 करोड़ चेहरे वाली उसकी नयन झलक सिर्फ एक ही होगी। भाषा भाषित अनेक करेगी, मगर विचार सबसे एक ही होगी। That was the vision of Mahakavi Bharati. Like that, Bharati has given a democratic idea in those days. நாம் இருக்கும் நாடு இது நமது என்பதறிவோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிவோம், பூமியில் எவருக்கும் இனி அடிமை செய்யோம், பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம். This country, we the people, for the people, by the people, what we are talking in the constitution, Mahakavi Bharati has given a declaration in those days, and if at all we bow our head, we will bow our head only before the Almighty Paripurna Bhagavan ke samne ke alawa, we will not bow our head. That was a declaration given by Subramanya Bharati. Bharati, even about the education, the laws, but not the least information I want to give you about Mahakavi Bharati. Mahakavi Bharati has translated many of the Vedic verses. Even the Gayatri Mantra he translated. Pachanjali Yoga Sutra he translated because he was a Sanskrit scholar. Bhagavad Gita he translated in Tamil, in other languages and also in English. Bharati has said than studying any other education, studying the education of our Vedic culture is very, very important. That's what Bharati has declared and his idea about education. Vidyarthiyon, students, I am very happy that you are all the real children of Mahakavi Bharati because you are only fulfilling the wishes of Mahakavi Bharati by studying this Vedic culture, and you are going to give the light in future for the next generation. For I am so happy because of the lack of time. Bharati has declared how the nation will be in future. Vayamenum peidhanai adithom, poimai pambai pilanguyirai kudithom, viyanulagu anaithayum amudana nugarum, veda valvinai kaipidipom. That was the declaration. The life of our future India will be only a Vedic life. Vedic life. Vedic life. That was the declaration given by Bharati. With that, I take this opportunity. Thanks to one and all for giving this opportunity. Though due to short of time, I feel of coming once again, and any other occasion time permits, I want to share my views more. And thanks to everyone, especially Sarajji and also Dikshitji for giving this opportunity. Due to lack of time, I am unable to share more of my views. Once again, Dhanyavad. मेरे विचार में इन्होंने जो कुछ कहा वो तो अद्वितीय था ही, लेकिन हिंदी में इनका प्रवाह जो था वो हैरान कर देने वाला था। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं हमारे बीच में श्री श्यामलाल शर्मा जी, उनसे निवेदन करता हूँ। भारत माता की। मेरे ही पता तो सुनने के मूड च नहीं आओ, ये अपना अपना सब्जेक्ट होंगे ना, क्योंकि थोड़ा इस वेले राशन का समय भी होना, लंगर भी खुले का होना है, ध्यान थोड़ा पीछे है। इसीलिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब ऑडियंस सुनने के मूड में नहीं हो तो ऑरेटर को समय को ध्यान में रखते हुए इतना ही बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर और देश में आए हुए हमारे मेहमान और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवासन जी, डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, बहुत ही जुझारू तरीके से अपनी बात को रख रहे थे हमारे
थिरु एस सतीश कुमार जी, जो एडवोकेट भी है पेशे से, और हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्रीमती सीमा सहगल जी, और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हमारे ऐसे प्रोफेसर शरद शर्मा जी, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर, डियर स्टूडेंट्स। मुझे पता, मैंने पहले कह दिया कि आप सुनने के मूड में नहीं है, और मैं भी सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि समय सीमा जो आप लोगों को बताई गई है उसका हमने उल्लंघन किया है। और ये ऐसा होता है क्योंकि जब हम सोचते हैं कि नेता लोगों को भाषण आता है, लेकिन मैं आज बहुत बार 2-3 बार जनरल जीडी बख्शी से भी स्टेज शेयर की है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है, हम डिविएट हो जाते हैं। इसलिए मैं आज सुनना चाहता हूं उपकुलपति जी को। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। ये जो आजादी के 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, और इसका जो विषय पे हमारे तमिलनाडु से जुड़े हुए जो हमारे परम आदरणीय पैनलिस्ट थे, और जो सब्जेक्ट है सुब्रमण्यम भारती, और अगर उनकी आयु का देखेंगे तो बहुत ही अल्पकाल है, 39 ईयर ओल्ड। लेकिन जो लोग इतिहास रचते हैं उनकी आयु लंबी नहीं होती। आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लें, इंग्लिश फिलोसफर आप शेक्सपियर को देखें, तो ऐसे ही रहे हैं सब। तो यहाँ एडवोकेट साहब ने भी, प्रोफेसर जनरल बख्शी ने भी ये बात जो है जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के बारे में बोला, लेकिन इसमें मैं एक इजाफा करूंगा अगर आप बातचीत बंद करेंगे तो, क्योंकि हमें बहुत से लोगों को जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता नहीं है। हम वीर शिवाजी की भी बात करते हैं, करनी चाहिए। हम महाराणा प्रताप की भी करते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान जी की भी बात करते हैं, और साउथ के जो रूलर हुए हैं उनकी बात भी करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ना हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिखी, अगर लिखी तो उसको डिस्टॉर्ट किया गया। हमारे जम्मू कश्मीर के रूलर जो हैं उनको भी 200 वर्ष हो रहे हैं। 17 जून को 200 साल होने हैं महाराजा गुलाब सिंह जी को जब रॉय तिलक हुआ था। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में डोगरा रूलर एक ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी कभी भी विद इन द भारतवर्ष अपने लोगों से कभी नहीं लड़े। वो उन्होंने जो अपनी टेरिटरी जो है, यहां बल्तिस्तान, एक्सेचन, स्कर्दू की बात हुई, अफगानिस्तान तक, तो वो डोगरा रूलर ही हैं हिंदुस्तान में। 563 प्रिंसली जो स्टेट्स हमारी रही है, 562 आपस में लड़ती रही हैं। और आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसने अपनी टेरिटरी जो है वो दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करके एक्सटेंडेड की, और हिंदुस्तान की प्रिंसली स्टेट्स में दूसरी सबसे बड़ी रियासत बनाई। अठारह 22 में यहां राय तिलक हुआ। 1846 में लाहौर अमृतसर ट्रीटी हुई जब महाराजा बने महाराजा गुलाब सिंह। और टोटल बना के
125 साल डोगरा रूलर ने यहां राज किया, एंड यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल इंसिडेंट यहां कम्युनल राइट हो। 74% मुस्लिम कम्युनिटी थी और 26% जो थे वो हिंदू थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और उसके लिए जुम्मेवार कोई बाहर का नहीं है। और यही एक रियासत थी उस समय भी, यहां अंग्रेज जो है अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं कर सके। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कहीं इतिहास नहीं बोलता, हिंदुस्तान के हिस्टोरियन नहीं लिखते। जम्मू कश्मीर वालों ने, जो हमारे हिस्टोरियन थे, जहां लिखने वाले थे, उन्होंने नहीं लिखा। अगर लिखा तो लखनपुर के पार नहीं गया। तो इसलिए मुझे आप लोगों को, नई जनरेशन को बताने की जरूरत है कि आप लोगों को तो अपने इतिहास का नहीं पता। देखो तमिलनाडु वाले आज सुब्रमण्यम भारती को, अच्छी बात है, ये इंटीग्रेशन है, कल्चर को एक्सचेंज होना चाहिए, लिटरेचर बाहर आना चाहिए, चाहे वो पोइट्री की शक्ल में हो, आपस में एक्सचेंज होना चाहिए। सिल्क रूट की जहां बात हुई, आप लोगों को पता ही नहीं होगा सिल्क रूट कौन था। क्यों अंग्रेज जो थे इस रियासत को इंडिपेंडेंट रियासत रखना चाहते थे, क्यों उन्होंने बल्तिस्तान को 1942 में अपना रीजन ले लिया, उसका कारण था। तो इसलिए ये इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। आज मैं सुब्रमण्यम जी की जो गाथा जहां पे सुनी है, बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में, जिनकी पहचान ही नहीं हुई। इतिहास बदल दिया गया, लेकिन प्रकृति का नियम है। यहां इन्वेडर्स की बात हो रही थी, 850 साल इन्वेडर्स ने हमें डिमोलिश करने के कोई कोशिश नहीं छोड़ी, और उसके बाद ऑलमोस्ट 190 साल ब्रिटिशर रूलर, ईस्ट इंडियन कंपनी। लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा थी, वकील साहब कह रहे थे, जो हमारी आस्था थी, जो हमारा फेथ था, उसको कोई नहीं मिटा सका। राम हमारे हृदय में था, है और रहेगा। में साल आप लोगों ने कोर्ट में केस, अरे राम लल्ला अगर अयोध्या में पैदा नहीं हुए, उनका अवतार नहीं हुआ, तो कहा अब हम मक्का मदीना में थोड़े बना रहे थे मंदिर। कारण रहे हैं कुछ, हम सचेत नहीं रहे। मैंने कहा है, इसीलिए मुझे कोई और बात नहीं है कि मुझे स्कोर सेटल करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आपस में लड़ते रहे, लेकिन डोगरा रूरल लखनपुर के पार नहीं गए। शादी की, नेपाल में भी की और कांगड़ा में, चंबा में भी की, लेकिन बेईमानी नहीं की। भाई भारतवर्ष के लोगों के साथ क्यों लड़े? सिराजुद्दौला ने क्या किया, किसने क्या किया, किस किस का व्याख्यान यहां सुनाए आपको हम। फॉरगेट द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर, दैट इज साइन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। इतिहास के पन्नों को रोज खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास से सीख लेने की जरूरत होती है। और आज हिंदुस्तान उस तरफ पे जा रहा है कि दुनिया का इतिहास हिंदुस्तान लिखेगा। दुनिया का इतिहास लिखेगा। कभी कभी लिटिल नॉलेज जो है वो भी तंग करता है। अभी देख रहे हैं 8-10 दिन से
क्या हो रहा है। ये फैनेटिक लोग हैं दोनों तरफ, क्यों फितना खड़ा करना भाई। जब संगठन ने ये बात कह दी, आप लोग भी ट्विटर पे जाते होंगे, फेसबुक पे जाते होंगे, मैं इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूं। हमें तो हमारा मजहब सनातन सिखाता नहीं किसी से बैर विरोध करना, किसी की अपनी पद्धति हो सकती है, पूजा पद्धति, और हिंदुस्तान को तो एक सेट फ्रेमवर्क में, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काम करना है। हम दूसरे के मजहब में क्यों इंटरफेरेंस करें। जब इस राष्ट्र के प्रधान सेवक ने कह दिया कि अब राम मंदिर बन रहा है, अब राष्ट्र निर्माण में लग जाओ, लेकिन कुछ छोटे भैया आज भी शरारतें कर रहे हैं इस मुल्क को डिस्टर्ब करने के लिए। वो दोनों तरफ है। मोहन भागवत जी ने कह दिया, क्या जरूरत है हमें दूसरों के घरों में घुसने की। हमें राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर भारत को सुपर पावर नहीं बनना है, विश्व गुरु बनना है। हमारे पास तीनों चारों साइंस है। हमारे पास स्पिरिचुअल साइंस है जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास ट्रेडिशनल साइंस है जो किसी के पास नहीं है, जो आज आयुष और दूसरी चीजें आप देख रहे हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं थी। आप त्रेता युग में देख लो, द्वापर युग में देख लो, व्हाट इज दैट। तो ये सारी चीजें मिलके, और खासकर यंग जनरेशन जो आप बैठे हुए हो, आपकी एनर्जी को हमें ड्रेन नहीं करना है, उसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज तब होगी जब संस्कार अच्छे होंगे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी, वैल्यू एडेड नहीं। वो आज कहीं ना कहीं कमतर होती आ रही है। तो तमाम चीजों का मिश्रण होते हुए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। आज आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई, अब सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है। हमें तो पढ़ाया ही यही जाता था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, अल्तमश, यही पढ़ा ना आपने। दक्कन से आए जी सिराजुद्दौला, वहां से आ गया जी फलाना। हमारा इतिहास ही जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया। तो आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमारे पास स्पिरिचुअल साइंस है जो किसी के पास नहीं है। और ऐसे बड़े बड़े गुरुकुल जो हैं, जिस तरह से हमारा विकास हो रहा है, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का विकास हो, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए। एंग्लो भाषा एक स्टेटस सिंबल बन गई हमारी। क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके, उनको भी भाषा आती है। हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हैं, मुझे नहीं लगता बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो, लेकिन हमेशा आप देखेंगे मेरे ख्याल है 14 इंटरनेशनल लैंग्वेज उनको आती हैं, जितना मैं जानता हूं। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था हिंदुस्तान में। मैं अब कंक्लूड करूंगा। मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो मेरी आदत थी, मैं इंटरेक्शन करता था। तो सबसे पहले मैं डाउन दी लाइन हायरार्की, मैंने कहा जो सफाई कर्मचारी हैं और फीमेल मल्टी वर्कर्स हैं और आशा वर्कर जो है, मैं उनसे इंटरेक्शन करूंगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज करूंगा। तो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टरल अफसर ने वो कर दी। अब जब वो ओपनिंग की नोट पढ़ने लगे तो वो अंग्रेजी में है, और मेरी आशा वर्कर जो है वो मैट्रिक भी पास नहीं है, जो फीमेल मल्टी वर्कर है वो मैट्रिक पास नहीं है।
तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि आज का कार्यक्रम जहां ही संपला, आगे से जिस भाषा में अगर कश्मीर में है तो वहां ऑरेटर मिल जाएगा हमें, नहीं तो ट्रांसलेटर ले आएंगे, क्योंकि मुझे जो कहना है वो इन तक पहुंचाना है। कभी कभी हम शो डाउन करने के लिए, और एंग्लो भाषा इतनी हावी हो गई हम पे कि संस्कृत को और हिंदी को तिलांजलि दे दी। अब साउथ इंडियन तो बोलते ही हैं, बट जम्मू वाले ही के प्रॉब्लम है। हम 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि डोगरी, और आज खुशी हुई 5 भाषाएं जो हैं आपकी यहाँ की राष्ट्र भाषाएं भी बनी और सरकार की भाषाएं भी बनी। अगर हम ही डोगरी नहीं बोलते, डोगरी के लिए स्ट्रगल नहीं करते, तो फिर डोगरी जो है 8वें शेड्यूल में तो आ गई, लेकिन जमीनी सतह पे कैसे परकुलेट होती। आज भी मेरी लिटरेसी रेट जो है, फीमेल लिटरेसी रेट इज नॉट मोर देन 70% इन माय स्टेट, तो उन तक भी तो मैंने वो कम्युनिकेट करना है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि शरद जी, ये आपस में हमें नोट एक्सचेंज करते रहना चाहिए। तमिलनाडु वालों ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमें भी अपने जो, चाहे वो कलम के वॉरियर हों चाहे दूसरे वॉरियर हों, देखिए हमारी पद्मा सचदेव जी थी, उन्होंने डोगरी में गाने गवाए लता मंगेशकर जी से, अपने कल्चर को, अपने संगीत को प्रमोट करने के लिए। अभी मेरी बहन जो गाना गा रही थी, जहां ज्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा, हाँ, क्योंकि इनकी तरज जो थी वो पाखू वाली थी। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन तमाम चीजों को, तो इसलिए अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहो। मूल मंत्र है, आज सबसे अच्छी श्रद्धांजलि भारती जी को होगी कि तमाम लोग अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहें, और इस मुल्क की इंटीग्रेशन को, यहां से भी कोई थोड़ी बहुत जग पहुंचती है, मजहब के नाम पे नहीं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, राष्ट्र सबसे बड़ा है, नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, उसको लेके चले हम। धर्म की अपनी अपनी पद्धति है, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है। तो मैं एक बार फिर बाहर से आए हुए मेहमानों से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों का भी, क्योंकि आप अब पिन पॉइंट साइलेंस हो गए, पता नहीं क्यों हुए। ये एक कनेक्शन जोड़ना चाहिए कि सुनना क्या चाहते हो आप, और टीचर को तो इसमें बड़ी कमांड होनी चाहिए। बहुत से प्रोफेसर या टीचर पढ़ाते हैं और रटा मार के आते हैं, नोट बना के आते हैं। आजकल तो वो टीचिंग की भी जो है वो सारी चीजें हो गई, तो वो स्टूडेंट्स के खासकर इन हो जाता है। तो इसलिए ये अपनी अपनी ट्रेनिंग है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्यामलाल शर्मा जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से व्याख्यान दिया अपना और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं सिर्फ इतने कहना चाहूँगा, 2 बातें। एक तो ये कि तमिलनाडु ने आज दस्तक दी है, हमें भी इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तमिलनाडु हमारे पास आया, हम भी जम्मू की कल्चर लेके तमिलनाडु जाए, एक तो ये। और दूसरी तरफ ये कि तमिलनाडु में हमारा परिसर नहीं है, सो संस्कृत को भी उस तरफ जाना चाहिए और उस तरफ भी परिसर इत्यादि स्थापित करें, ताकि ये संस्कृत भी तमिलनाडु तक पहुंचे। तमिल हमारे पास आ रही है,
संस्कृत तमिल में पहुंचे। इन दो बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे महामहिम, हमारे बहुत माननीय प्रोफेसर श्री श्रीनिवास वर्धेन साहब को। सर्वेभ्यः प्रणामाः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणेऽस्मिन् वेद्यां समुपस्थिताः सर्वे महानुभावाः सम्पूर्णं भारतम् अत्र विकसितम्। सम्पूर्णं भारतम् अत्र विकसितम्। अत्र तमिळुनाडतः कश्चन महानुभावः, काश्मीरदेशतः, मध्यदेशतः, पश्चिम मुम्बईतः एवं दिल्लीतः समग्रं भारतम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे भवति। अध्यापकेष्वपि समग्रभारतं वर्तते, अस्माकं छात्रेषु। अतः अद्य सुब्रह्मण्य भारती महानुभावस्य महाकवेः पुण्यस्मृतेः शताब्दी महोत्सवकाले भारतस्य अमृतमहोत्सवकाले सर्वेषाम् अहम् अभिनंदनं कर्तुम् इच्छामि। यहाँ पे ने हिंदी में बात किया, अंग्रेजी में बात की, तमिल में बात की, तो मैंने सोचा कि संस्कृत में होना चाहिए, क्योंकि भारत को अखंड बनाने वाली भाषा भारतीय है, वो संस्कृत है। तमिलनाडु लोगों के लिए भाषा है तमिल है, हिंदी लोगों के लिए हिंदी है, गुजराती के लिए गुजराती है, लेकिन भारत के लिए क्या भाषा है? भारत का भाषा है संस्कृत। भारतस्य भाषा भारती, भारती इत्युक्ते संस्कृतम्। हमारे देश में प्रदेश अनेक है, देश एक है। संगीत अनेक है, लेकिन सुर एक है। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है। शब्द अनेक है, लेकिन साहित्य एक है। भारत की गरिमा आज इतने महानुभावों ने हमें सुनाया। सुब्रह्मण्य भारती के नाम पर भारतीयर बोलते हैं, हिंदी भारतीयर, उसका अर्थ है भारतीय। दक्षिण के आचार्य शंकर, बाल शंकर काश्मीर में आते हुए, काश्मीर में आकर आचार्य शंकर बन गए। मलयालम देश से बाल शंकर वहां से चला। जैसे जैसे वो भारत भ्रमण करते हुए वो काश्मीर देश में आ गए, शारदा पीठ में आ गए, आचार्य शंकर बन गए। तो आज सुब्रह्मण्य भारती, आप भारतीय नाम से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आकर भारतीय बन गया है। काश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ माता जी है, यहाँ जम्मू में माता जी है, वहाँ कन्याकुमारी। वही माता को हम कन्या के रूप में दक्षिण में पूजते हैं, यहाँ के माता के रूप में पूजते हैं। भारत ऐसा एक देश है, यहाँ अनेकता है, लेकिन उसमें एकता को हमने हमेशा एकता को ढूंढा है। आज हमारे सुब्रह्मण्य भारती जी के स्मरण से हम सबने भारत को फिर एक बार, अखंड भारत को, भारत का अखंडता को स्मरण करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सबको धन्यवाद। संक्षिप्त रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ कुलपति जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ
धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर योगेंद्र दीक्षित। तमिलनाडु मक्कल जम्मू कैंपसानी सर्वांग नंद्री. Good afternoon. I am Yogendra Dikshit. It is my proud privilege to present the vote of thanks in this August gathering. First of all, I propose thank to all the amazing people of Tamil Nadu and Jammu and Kashmir who have witnessed the amazing program on the Son of the Soil, the freedom fighter, the poet Subramanyam Bharati. The kind of spirit reflects the true soil of India, which is the unity in diversity. We thank Sri S. Satish Kumar and T. Krishnamurthy of the Youth Association of Cultural Development, Chennai, Tamil Nadu, who are the coordinator of the tectonic occasion. We thanks you for convening this program and also choosing our university for holding this function and providing every kind of support. Our thanks also go to Mr. Murali MD Sri Krishna Sweets, who is the main behind the great mission of Bharatham Engum Bharathi, which means Bharati in Bharat, spreading Bharati message across the globe. We also thanks our sponsor of the program, especially Tamil Matrimony and Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai. Our thanks also go to the Sri Shamlal ji, former Minister and Vice President of State BJP, who is our district guest today. Thanks you so much for being with us today. It is also our proud privilege to have with us a chief guest of the program, our Honorable Vice Chancellor, Sir Professor Srinivas Varkedi ji. You have been an inspiring and guidance force for all of us, who has pledged to take this university on the path of innovation and development in the field of education and research. Your impactful persona, affirmative attitude, and comprehensive spirit make you one of the most enduring personality who is the his ability have the power to motivate and inspiring teachers as well as students to do better in their professional and academic life respectively. Thank you very much, sir, for coming here and gracing the occasion. We also thank our virtual chief guest, Professor N. Panchanatham, Honorable Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, and guest of honor, Major General G.D. Bakshi, for his motivational and stimulating speech. We are delighted to listen to you both. We also bow our head to reverence before Swami Dharmishtanandi Maharaj, Manager, Sri Ramakrishna Math, Chennai, and thanks him to the amazing message. We also sincerely thank the artist duo, Kumari Shiva Sri Skandanand Prasad ji from Chennai and Srimati Shima Anil Sehgal from Jammu. That was a methodic and divine speech from the very spirit of Mother India, and for all that we were deeply thankful indeed. We are also thrilled to hear Mr. S. Satish Kumar, the main speaker of today's function. It was a great introduction to the great Tamil poet and freedom fighter, and would go too long in kindly more interest in the life and writing of the great son of India. We are also thanks Professor Madan Mohan Jhaji, the visionary director of our campus. He is always support the new initiative of ours like this one. Thank you, sir, blessing us the being of supportive guardian. We also opportunity to thank our very own Professor Kuldeep Sharma ji. He works as a bridge between the campus and the headquarters and is everybody to resolve any problem we encounter. We are thankful for your kind presence at our campus, or rather your campus. We would also like to thanks Sri Saraswati Sharma ji, sir, Dean and HOD Modern Subject, who has conceived, designed and anchored this program to its excellence, without whom we would not have able to organize this program so well. As our deepest thank you, sir. We are also thanks our learned head of the various departments, Professor Manoj Kumar Misra ji, HOD Veda,
Professor Prabhat Kumar Mahapatra ji, HOD Jyotish, IQAC Coordinator and HOD Sahitya, Professor Satish Kumar Kapoor ji, HOD Vyakaran, Dr. Kailash Chandra Raj ji, and HOD Sarvdarshan, Dr. Ghanshyam Misra ji. And we also thank the various teams of our teaching and non-teaching staff members who work presently to make this event enormous success. We also thank the B.Ed student who, under the able supervision of Dr. Subsri and Dr. Snehilata, spent hour in searching his heat to prepare the attractive rangoli in the entrance. We would also like to thank the technical team at Chennai, comprising of Mrs. Purnima and Sri Ranjit, and Jammu, Sri Vishal Mahajan ji, Srimati Drupadi Bala, and Sri Akhil Sharma, Dr. Vivek Kumar, and Dr. Hariom for making this program possible through hybrid mode. Thank you very much. We also thank Mrs. K.V. Subba, anchored this program virtually mode. We also extend our thanks to the media team covering this event. And above all, we thank our dear students and the online viewers, without whom all this would not have been a success. To all our online and offline viewers, our heartfelt thanks for being there and having maintained patience throughout the program. Once again, thank you all. Jai Hind. A few words from our director. सभी छात्रों के लिए है। कुलपति जी का जो अभिभाषण था छात्रों के लिए नहीं था। मैं समझता हूँ कि छात्रों से मिलना मुख्य है और कुलपति जी जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने छात्रों से जरूर मिलते हैं। तो अगर छात्र लोग चाहें तो थोड़ी 1 घंटे के लिए भोजन करके आ जाएं तो कुलपति जी के साथ यही हॉल में बैठ के करेंगे। कितना आधे घंटे होगा तो 2:30 में आ सकते हैं। क्योंकि कल एग्जाम भी है बहुत सारे छात्रों का। तीन बजे ठीक है, 3 बजे यहीं मिलते हैं सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है। कृपया खड़े होंगे शांति पाठ। शांति पाठ होगा, कृपया हॉल में बने रहें। ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। एडवोकेट साहब, तो ये क्या साहब क्या जाना पीछे देखना साथ में देखिए। नीचे लेके कैमरे